and the role of gut microbiota in various cardiovascular, neurological, and autoimmune disorders. Then we had Dr. Pramod Rath, a professor from JNU Delhi, who delivered a talk on inspiring students in science, education, and research to make a better society. He shared his excellent work on non-coding RNAs and role of telomeres in aging and cancer. This was followed by a lecture by Dr. Dinesh Mishra, an ophthalmologist and president of Andhashraddha Nirmulan Samiti, Raipur, Chhattisgarh. Sir emphasized on the role of scientific temperament in curbing the menace of superstitions prevailing in our society. And in the final technical session, Dr. Sunita Patra ma'am gave a very relevant talk on sickle cell awareness and its mitigation using scientific approach. She very well explained the pathophysiology of the disease and role of awareness campaign to control it. Thank you, Dipali. Thank you, Dipali. And you can also summarize today's what the sessions. Course of events. Yes, I'm doing the same. I'm doing this. And today we'll be beginning with our technical session with Dr. Sadhna Sharma. She is Academic Director of MLC College, Korba, Chhattisgarh. Ma'am will be speaking about how science impacts on our daily activities. It will be followed by a talk by Dr. Varnika Sharma, Associate Member of Center for Defense Studies Sciences Research and Development and fellow member of ICSSR, who will be speaking about social direction of science and youth. Then we'll have Mr. Shashank Sharma, former Director, Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy, speaking about social and cultural studies in science. And then we'll be moving to our valedictory session, where we have Dr. Anil Kumar from JP University, Bihar, talking about opportunity in a diversity. The final talk of today's session would be by Dr. Luis Mena Berito from University of Sao Paulo, Brazil, talking about social implications of chronobiology. Then we'll be having the summary of webinar by our organizing secretary, Dr. Sunita Patra ma'am, followed by our valedictory speech by our principal sir, and then the convener of this program, Dr. Renu Maheshwari, will be extending the vote of thanks. That is all about the program, the session we'll be having today. And very soon we'll be having our first speaker and we'll begin with the technical session. Thank you. Thank you, Dipali. I think Luis Menet Berito, actually he's having certain internet problem because there are storms there in Brazil. Okay. So he's facing difficulties. Again, he has requested that he will try to join 1 hour before his talk. And in case he's not able to join, we have to start our valedictory session. Okay, fine. Or we may have to reschedule accordingly. Reschedule accordingly, okay, because he's facing some technical problem due to storms in Brazil. Okay. And we are waiting for Sadhna Sharma ma'am to join. Yes, Good morning, everyone. हाँ, गुड मॉर्निंग. साधना शर्मा मैडम जुड़ गई हैं जी. Good morning, ma'am. So we can begin with our technical session. We have Sadhna Sharma ma'am with us, Academic Director, MLC College, Korba, Chhattisgarh. Ma'am will be speaking on how science impacts on our daily activities. I request Dr. Renu Maheshwari ma'am to formally introduce our speaker to the audience. Good afternoon. I, Renu Maheshwari, welcome to all. Be a part of this national webinar on scientific social responsibility. It is my immense pleasure to introduce today's first speaker, Sadhna Sharma. She is Director of MLC College, Korba, Chhattisgarh since 30 years. श्रीमती साधना शर्मा ने 1983 में जीव विज्ञान में बीएससी किया और 20 साल की उम्र में एक रूढ़िवादी परिवार में उनका विवाह हो गया.
और आप बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में बस गई। मध्यवर्गीय भारतीय महिला किसी वीर योद्धा से कम नहीं होती। इसी श्रेणी में साधना शर्मा ने भी परिस्थितियों से संघर्ष किया और शादी के 10 साल बाद उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया, जो उन दिनों बहुत मुश्किल होता था। और आपने इसी क्रम में 1993 में PGDCPA, 98 में PGDC एंड 2005 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MSc, 2008 में कंप्यूटर साइंस में MPhil, 2009 में MBA और 2011 में HR किया और अभी आप PhD कर रही हैं। Meanwhile, she had worked a lot. She gave training to corporate sector NTPC audit officers cell SBI Balco. She gave free of cost training to 112 collectorate employees in Korba. Considering the Beti Padhao, she gave admission to 50 slum girls who are in now 10th standard. Valmiki Ashram students get free computer education in summer holidays from her, and also she provides computer to ashram. You have given computer training to District Urban Development Authority, disabled students, Divyansh, and a student of PM Ki Kendriya Vidyalaya. You have donated computer to Dondera village for tribal student and 25 computers in different tribal schools of Korba district. इस तरह कंप्यूटर शिक्षा और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की समझ से इन्हें इस क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त हुई, जिससे ये उद्यमी बनी और बाकी लोगों को भी इसी तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। 20 to 25,000 of the girls are educated in 28 years under her guidance. श्रीमती साधना शर्मा की पहचान बहुयामी है। सार्वजनिक जीवन में कई हिस्सों में वे दखल रखती है। वे लेखिका भी हैं, उद्यमी भी हैं और समाज सेविका भी हैं। As a social worker, she had donated masks, sanitizer, and food packets to needy people on Corona period. सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 100 वुमेन्स अवार्ड से सम्मानित किया। इतने व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने कला से नाता नहीं छोड़ा। वे मधुबनी आर्ट में गहरी रुचि रखती हैं। वे ब्लॉगर भी हैं और नियमित रूप से अपने सुंदर अनुभव इसमें साझा करती रहती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में खान-पान की परंपरा पर पुस्तक लिखी है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति में स्थानीय व्यंजनों के महत्व पर अपनी बात रखी है। You also write a book on role of ICT education for women empowerment for betterment of India by using physiology, Topos-based Fuzzy analyzed hierarchy process, which is published in Hindi, English, Bengali, and Chhattisgarhi languages. She also honored by the Vedanshi Award in 2011. Our college is privileged and honored to have such a inspiring guest, Sadhana Sharma, among us. Now I invite to Sadhana Sharma for her talk, How Science Impacts on Our Daily Activities. Welcome, madam. Thank you. Thank you to all of you. आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे हम इस आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं। तो एक वर्ड हम हमेशा सुनते हैं, स्टीम, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मशीन का कॉम्बिनेशन करके हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार की जरूरत होती है। और इस प्रतियोगी समाज में हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की जरूरत पड़ती है। आज मनुष्य के विज्ञान और तकनीकी में बहुत से आविष्कार किए, बहुत से विकास किए और आज हमारा देश
कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। कुछ साल पहले जब मैं 2015 में यूएसए गई थी तो मुझे लगा था कि हमारा देश कब ऐसे बनेगा, लेकिन आज के परिवेश में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा देश भी अन्य देशों के बराबरी में आ रहा है। और इसका कारण ये है कि आज मनुष्य ने विज्ञान तकनीकी को बहुत विकसित कर लिया है। अब तकनीक के बिना रह पाना मुमकिन नहीं है, यानी कि नामुमकिन है। इससे हमारे जीवन को सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। हम विज्ञान में प्रगति नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन पहले की तरह ही दुष्कर होता और कठिन होता। नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुंचाया है। हमारे चारों तरफ अनेक तकनीक मौजूद है। मोबाइल आज सबसे ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर मेरा और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है। और उस मोबाइल के फोन और टीवी और जो स्क्रीन हम देख रहे हैं उसको हम साझा कर सकते हैं, और वो सारा टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पानी निकालने वाला मोटर, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रेन, सारे यातायात के साधन में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का समावेश है। नई तरह की दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरणों की सहायता से हम आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, जो जैसे कि टेलीमेडिसिन। हम अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहें, लेकिन हम अगर वहां जाने में असमर्थ है, हम बिस्तर में हैं, फिर भी हमारे डॉक्टर के साथ संवाद हो सकता है और हम बहुत अच्छे से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये सारे तकनीक का ही कमाल है, जो हम आज आप सबके बीच में हम जुड़ सकते हैं। इन तकनीक को देखते हुए मानव मानव जो है जीवन के सुधार के लिए हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद लेते रहता है। यदि हम तकनीक की मदद नहीं लेते, जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, बिजली आदि, तो भविष्य में कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते, हमेशा पिछड़े हुए ही रहते। यहाँ तक कि इसके बिना हम आज के इस प्रतियोगी और तकनीकी संसार में जीवित भी नहीं रह सकते। तकनीकी के उन्नति उदाहरण के लिए मैं ये बता दूं कि मेट्रो की स्थापना हो या रेलवे प्रणाली की स्थापना हो, रेलवे आरक्षण प्रणाली, इंटरनेट पर सुपर कंप्यूटर, मोबाइल, फोन सभी क्षेत्रों में लोगों की ऑनलाइन पहुंच हो चुकी है। और इसी तारतम्य में मैं एक कंप्यूटर का एक टर्मिनोलॉजी है जो आईओटी करके कहते हैं। तो आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आज हर चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द जो है 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक केविन एस्टन द्वारा गढ़ा गया था, जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करते थे। और उन्होंने एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए RFID प्रोटोकॉल का परिचय दिया, यानी कि ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल। चिप्स लगाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके द्वारा जितने भी उत्पादक है उसके आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। आप ये वर्ड RIFD स्कूलों में भी सुने होंगे। जब बच्चे स्कूल आते हैं, अपने गेट पे एंटर करते हैं, तो उनके पेरेंट्स तक वो बात पहुंच जाती है, यानी कि डिवाइस के माध्यम से एक डिवाइस और दूसरा डिवाइस जब कनेक्ट होता है, और जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है, जो अपने एक डिवाइस का डेटा दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है। और ये ही क्या है, आईओटी का कमाल है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल है। तो हम ये देखते हैं कि आईओटी जो है आज वृहद रूप में सब तरफ लग रहा है। जैसे आपके घर में जो स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट टीवी है, ये सारे आईओटी का ही देन है। सबसे पहला आईओटी जो है वो टोस्टर में लगा के यूज किया गया था। और व्यक्ति जो है आईओटी के द्वारा, जैसे मान लो हम अपने घर से कहीं बाहर निकले
और अपना दरवाजा बंद करना भूल गए या टीवी का स्विच ऑफ करना भूल गए, तो स्मार्ट घर का जो कंबाइंड आर्टिफिशियल ब्रेन होगा वह इन चीजों को सेंस करके अपने घर के दरवाजे, यानी कि घर के दरवाजे को बंद कर देगा और टीवी को भी बंद कर देगा। घर का जो कंबाइंड आर्टिफिशियल ब्रेन होगा वह इन चीज को सेंस करके अपने आप घर के दरवाजे और टीवी को बंद कर देता है। इस बात की जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगा? फोन में मिलेगा। यानी कि आपका जो एक डिवाइस है, दूसरा डिवाइस फोन है, और दोनों के बीच में इंटरनेट का ऑन होना जरूरी है, और तब ऐसे में ये काम करते रहता है, और इसको हम IoT कहते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे IoT का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया भर में 1200 करोड़ उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी मेकर आजकल ऑटोमेटिक करके एक डिवाइस आ गया है, जिसमें वो सिर्फ आपको आटा, पानी, तेल सारा कुछ डाल देना है, वो खुद गूंथेगा, उसका लोई बनाएगा, लोई बना के उसे रोटी कितना थिक चाहिए, यानी थिकनेस कितना होगा, फूलना कितना है, कितना कड़क चाहिए, वो सारा डिवाइस में मांगता है, और फिर वो वैसे ही रोटी आपको फुली फुली रोटी बना के देता है। और ये सब कमाल है किसका? IoT का, यानी कि इंटरनेट ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और कहीं 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 हम ये कहते हैं कि इसका रिपोर्ट, कई जगह पे ये रिपोर्ट दावा करता है कि आने वाले संख्या में जो 1200 करोड़ था वो 26 गुना बढ़ जाएगा, और इसके अलावा इसका बिजनेस जो है 8.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इन आंकड़ों से आसानी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इस तकनीक का कितना मांग होगा। तो ये क्या करता है? आयो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT, इसमें 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला मैं बोलती हूँ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी होना बहुत आवश्यक है। जब तक एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट नहीं होगा, आपस में डेटा शेयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए IoT डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। सेकेंड, आइडेंटिटी। हर एक IoT डिवाइसेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसके द्वारा नेटवर्क में उस डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफाई किया जा सके। जब डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती है तो डिवाइसेस को उनके यूनिक ID से ही पहचाना जाता है। तीसरा, सेल्फ कॉन्फ़िगर। IoT डिवाइसेज इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, और इन डिवाइसेस इसमें किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। फोर्थ, हेट्रोजिनिटी आर्किटेक्चर। IoT का आर्किटेक्चर हाइब्रिड टाइप का होता है। हाइब्रिड यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनता है, वो दैट वन इज कॉल्ड व्हाट? हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आर्किटेक्ट वैसे ही होता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिवाइसेस होंगे, और वो उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। या आर्किटेक्ट कहीं भी होमोजेनियस नहीं हो सकता, क्योंकि IoT डिफरेंट डोमेन को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए IoT का स्ट्रक्चर होमोजेनियस होता है। फिफ्थ, इंटेलिजेंसी। IoT डिवाइस में डेटा को कलेक्ट करने के लिए सेंसर लगे होते हैं। इन सेंसर में कलेक्ट डेटा से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना जरूरी होता है, इसलिए IoT डिवाइसेस में इंटेलिजेंसी का फीचर्स होना आवश्यक है। 6, स्केलेबिलिटी। IoT स्ट्रक्चर को स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि उनके यूज डोमेस्टिक डिवाइस से लेकर इंडस्ट्रियल टूल तक में होता है, अतः IoT स्केलेबल होता है। 7, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग। IoT डिवाइस स्मार्ट है, इनके लिए इनकी फंक्शनलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में लाइट लगे होते हैं, आपको अगर ग्रीन लाइट का कलर चेंज करना होता है, तो एक लाइट डिवाइस है और एक और डिवाइस है, दोनों कनेक्ट होंगे इंटरनेट से, और ऐसे को IoT बोलेंगे। और जब हम उसके कलर को चेंज करने बोलते हैं, या तो वो सेंस वॉइस से लेगा, जैसे मैंने कह दिया कि रेड कर दो, वो लाइट का कलर रेड में
चेंज हो जाता है। तो कैमरा लाइट के अकॉर्डिंग डेटा कैप्चर होते हैं और डे और नाइट के अकॉर्डिंग अपने कोड को स्वयं ही चेंज कर लेता है। तो ऐसे सेल्फ अडॉप्टिंग फीचर्स इसे कहा जाता है। सेफ्टी, पहले केवल कंप्यूटर मोबाइल कोड को ही इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन आईओटी टेक्नोलॉजी आने के बाद डिवाइस या ऑब्जेक्ट को ही इंटरनेट से इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। इतने सारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने पर सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि हमारा नेट हमेशा ऑन रहता है, तो हो सकता है उससे हमारे डेटा चोरी होने या सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आईओटी डिवाइसेस जो है सिक्योरिटी वर्क उस पर अभी भी चल रहा है, और डिवाइस कितना सिक्योर है ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मैं बता दूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स तीन क्लास में क्लासिफाइड है। एक, जब हम औद्योगिक यानी इंडस्ट्री के लिए आईओटी यूज करते हैं तो उसे आईआईओटी कहते हैं, इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के लिए जब हम इसे यूज करते हैं तो CIOT कहते हैं, कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थर्ड, एंटरप्राइज या EIoT, इंटरप्राइजेस सॉरी EIoT, इंटरप्रेनर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो हमने पहले ही बताया कि टोस्टर में अप्लाई किया गया था, और जिसका आविष्कार जॉन रेमकी ने किया था। और WW के बाद टिम ली ने जो किया था वह स्वतः संचालित हो जाती थी, और वो ब्रेड को जैसे ही टोस्ट होता था वो पॉपअप हो जाता है ना, मतलब ब्रेड बाहर आ जाता है, तो वो टोस्टर में अप्लाई किया था। आज लैपटॉप से लेके थर्मोस्टेट स्टेट और ऑटोमोबाइल्स तक के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाता है। और आने वाले समय पे यानी कि हम 2024 में है, यानी 2024 में आईओटी उपकरणों की संख्या 17 बिलियन से भी अधिक होने का अनुमान है, जो पृथ्वी पर लोगों की संख्या को पार कर जाएगी। यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी कितनी एकाकृत होती जा रही है, और आईओटी का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो रहा है। हम अगर चाहे तो कई अपने खुद के भी आईओटी का इस्तेमाल करके, जैसे हमारे पास लैंप पोस्ट है, हम चाहते हैं कि वो डे में स्विच ऑफ हो जाए लाइट जो है स्ट्रीट लैम्प, और नाइट में वो फिर से ऑन हो जाए, तो इस पे भी आईओटी का ही कमाल है। तो आने वाले समय पे हर उपकरण हर चीज आईओटी पे होगा। अब आने वाले समय और एक नया टर्मिनोलॉजी एआई पे डिपेंड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। तो ये जो बातचीत चल रही है वो काफी दूर तक जाएगी, और मैं अपने वक्तव्यों को यहीं पर अभी और चलाऊं, टाइम है अभी। आपके पास टाइम है, आप बोल सकती हैं 20-25 मिनट और आराम से। अच्छा, 20-25 मिनट हाँ, और बोल बिल्कुल सकती हूँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल, आप बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आईओटी जो है बहुत सारे जगह पे काम आती है। आईओटी का बहुत वास्ट रूप है। आईओटी जो है वो चार तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं आईओटी को। आईओटी जब हम लैंड पे भी ले सकते हैं, पैन पे भी ले सकते हैं, और वाईफाई पे रख सकते हैं, और डेटा नेटवर्क पे ले सकते हैं। हर तरह से वाईफाई का यूज कर सकते हैं। जैसे आने वाले समय पे हम QR कोड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, कि हर चीज को हम ब्लॉक करना चाहते हैं, या जिस चीज को हमको चाहिए कि कम से कम लोग वो देख पाए, या QR के बिना वो उस चीज को ना खुल पाए, तो ऐसे में हम क्या आईओटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय पे आईओटी एक इफेक्टिव इम्पैक्ट डालेगा सोसाइटी में, और हम इस पे बहुत से एजुकेशन पे और जस्टिफाई कर सकते हैं ह्यूमन के
कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ को इजियर बना सकते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस हम हर जगह देख सकते हैं। जो डेली लाइफ में हम अगर इस पे काम करें, तो जैसे फ्रीज भी हमारे पास, जब स्मार्ट फ्रीज आया है तो हम बोलते हैं कि ये फ्रीज दरवाजा खुले तब तब वो टेम्परेचर डाउन कर दे, या दरवाजा बंद हो तो टेम्परेचर हाई रखे। तो ऐसे करके ये सारे चीजों पे अप्लाई करता है। मैं इतनी ही तैयारी की हूँ, 20 मिनट का ही कर पाई हूँ, और अगर कोई क्वेश्चनरी हो तो मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू साधना। बहुत जी इमरजेंसी में है आज आप, मुझे मालूम है आपको यूएसए निकलना है, क्योंकि जी कुछ जी जी इमरजेंसी में आप कल बेंगलोर भी पहुंची हैं, तो आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक बहुत यू। बहुत अच्छी आपने बात बताई आईओटी के बारे में। और उसी के साथ आपने जो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात की जा रही है, जो जी कि भविष्य में शायद बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने अभी सुना कि वो अपने मन से कोई फिगर आउट कर सकता है, कोई हम्म केस सॉल्व कर सकता है, मतलब कुछ हम्म भी कर सकता है। हम्म तो हम्म आप क्या सोचती हैं इस विषय पर कि ये टेक्नोलॉजी जी समाज को हम्म कितना नुकसान पहुंचा सकती? फायदा तो खैर टेक्नोलॉजी का होता है, पर उसके साथ नुकसान भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं फायदे की तो बात नहीं करूंगी। नुकसान कितना पहुंचा सकती है, या हमारा यूथ कितना इसको यूज करके गलत डायरेक्शन में जा सकता है, उस पर अगर आप कुछ बात कहेंगी तो थोड़ा सा समझना हर चाहेंगे। हर हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो लोग अधिकतर बुरी बातों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और अच्छे चीजों को नहीं कर पाते। तो सही कहा रेणु आपने कि एआई जो है वो, जैसे आए दिन अभी हम पढ़ते रहते हैं कि कैसे हम इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम रूप से हम किसी के पिक्चर को किसी भी और के पिक्चर के साथ जोड़ के उनका डेप्थ बना लेते हैं, और वो फिगर को पब्लिश कर देते हैं, और उससे कुछ गलत तरीके से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही कंप्यूटर सिस्टम में रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, और इसके तर्क पे आधारित रहता है, और इससे मानव के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि वो गलत तरीके से उस बात को कर रहे हैं। और इसका अभी आने वाले समय पे साइबर के लिए बहुत बड़ा एक अ, अम, जोखिम है कि वो इससे कैसे बच सके। तो जब भी कोई चीज इस तरह के होते हैं तो उसके दूसरे पहलू को भी ध्यान देते हुए, जैसे साइबर क्राइम जो होता है उसका पहले तो सोचा नहीं जाता था कि बैंक अकाउंट का कैसे चोरी होगा, और कैसे उसका फर्जी फ्रॉड केस बनेगा। पर आज के समय में उससे भी निजात पाया जा रहा है। तो वैसे ही इसका भी कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन होगा, और ये इसका समाधान जरूर होगा आने वाले समय पर। और साइबर बहुत ज्यादा इस पे काम कर रही है। क्या सरकार कोई नियम या कोई लॉ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बना रही है, या इस तरह का पूरी देश में, पूरी दुनिया में इसकी बहुत चर्चा है क्योंकि आज की तारीख में, तो क्या इसके लिए कोई नियम, लॉ या कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है? हाँ जी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए क्राइम ब्रांच के पास और प्रशासन और शासन के द्वारा ये नियम जारी किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे जगह पे कैसे हम इससे निजात पाए, और इसके लिए बकायदा संविधान में ये पारित किया जाएगा आने वाले समय पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा अभी तो बर्निंग टॉपिक है ये, जी और इसके बारे में अगर हमको स्टूडेंट्स को जागरूक बनाना है, और हमको ये बातें अगर हमको सोसाइटी तक पहुंचानी है, स्टूडेंट्स को तो ठीक है हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं,
लेकिन जी सोसाइटी में अगर हमको इसको लेके जाना है तो क्या आप कुछ इस तरह का आइडिया आप दे सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो सकता है कि ये क्योंकि हमारा सेमिनार इसी पर है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है या फैकल्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है, और किस तरह से हम सोसाइटी को इसके मतलब लाभ और इसके जो दोष हैं दोनों से हम अवेयर कर सकें। तो घर घर जिस तरह से बात सोसाइटी की जब बात आती है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत काम किया है इसके लिए, थोड़ा जी सा जी जी। पूछिए। तो जब इस तरह की समस्या आए, जैसे कि हमारे पास बल्क में स्टूडेंट्स रहते हैं, तब हम ऐसे जगह पे नेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने एजुकेशन पे कर एजुकेशन वाले साइट के लिए करें और अदर साइट के लिए ना करें। पर एक चीज और है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में तो वो काम करवा सकते हैं, लेकिन जब वो घर जाए और वो किसी जागरूकतावश या किसी कोडिंग करने के बेस पे वो ये सब करने लगे, तो ऐसे समय पे वो उसके आईपी एड्रेस को कोड कर लिया जाता है और उस पे एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे समय पे बच्चों को इस बात को समझाना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके नेट से सब कुछ पब्लिश्ड हो जाता है। सो आप ऐसे चीजों से बचें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये एक तरह से क्राइम है। और इतना ही बोल सकते हैं हम। जी, मतलब हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं सोसाइटी में जी जी सामने और उनके मतलब बीच में जाके सोसाइटी में, जी। गांव में, विलेजेस हम्म में या स्कूल्स में हम्म, जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम हम्म, बताएं इसके बारे जी। में। जी कई बार धन्यवाद। ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है कोई कॉल आता है और वो परेशान होते हैं। तो मतलब ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल रही, तब हम उन्हें अवेयर करते हैं कि तुम उस कॉल को रिसीव ना करो अगर, और उसके लिए वो एफआईआर करने जाएंगे तो इससे तो वो और भी केस बिगड़ सकता है। और फिर एफआईआर करने जाते हैं तो वो उनसे बोल दिया जाता है कि आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को एफआईआर मत किया करें, आप इसको अपने लेवल पे सॉल्व करें। तो पर हमको अवेयर करना पड़ेगा बच्चों को कि आप इस तरह के काम से बचें, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस, आपका सिस्टम का नंबर सब कुछ सर्वर में जाता है और आप वहां से पकड़े जा सकते हैं। जी धन्यवाद। मतलब दोनों ही बातें हमको बतानी होगी कि इससे जी लाभ क्या है, कहाँ तक स्काइज द लिमिट है आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस में, जी। दोनों ही तरफ से, जी और इसको जी संभल के इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। That was such an inspiring talk, ma'am. You have proved with your work that no obstacle is big enough to stop a strong-willed woman of substance. You have shown that every one of us should work towards constant upgradation and move with the pace of society and become technologically literate. I request Dr. Renu Maheshwari, ma'am, to formally thank our speaker. थैंक यू साधना, आपने जी बहुत अच्छे तरीके से आईओटी क्या होता है, पहला टोस्टर जो कि हमें भी नहीं मालूम था, उसके बारे में बताया कि जी ये इंटरनेट की सुविधाएं किस तरीके से हमको डेली डे टू डे लाइफ में हेल्प करती हैं। ये भी बहुत अच्छे से बताया कि डिवाइस को अगर हम जोड़ दें, घर का दरवाजा बंद नहीं किया या और कोई प्रॉब्लम्स हमारे फ्रिज को बंद नहीं किया, तो वो किस तरीके से हम सेफली कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जो इसके दुष्परिणाम है, जिसके लिए हमको अवेयर होना है, सोसाइटी को अवेयर करना है, इसके लिए आप ऐसे भी लगातार कोरबा में काम कर रही हैं, देश में भी काम कर रही हैं। तो मौका लगेगा तो हम आपको हमारे कॉलेज में भी बुलाएंगे, बच्चों के सामने रूबरू होने से ज्यादा मतलब अच्छा होगा। और आपने बहुत ही मतलब मुश्किल से ये समय निकाला, 20-25 मिनट का, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका भी कि जो मुझे ये अवसर प्रदान किए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now our next speaker has joined. It's a matter of joy for me to welcome our next speaker, Dr. Varnika Sharma, ma'am, Associate Member, Center for Defense Sciences, Research and Development, and Fellow of ICSSR. Dr. Varnika Sharma has been associated with our college for many years, and it would be a wonderful experience to listen her speaking about social direction of science and youth. I request Dr. Kavita Das, ma'am, to introduce Dr. Varnika Sharma, ma'am.
हेलो, Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's audible. ओके, वेलकम वर्णिका। मैं सबसे पहले तो हम बता दें कि वर्णिका हमारे कॉलेज से जुड़ी हुई है। शी इज माय स्टूडेंट आल्सो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि टीचर अपने स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन पढ़े। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स इस ऊंचाइयों पर पहुंचे कि हमें उनका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़े। वेलकम ऑल ऑफ यू इन सेकेंड डे ऑफ दिस वेबिनार। मैं शॉर्ट में वर्णिका का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के बताती हूँ कि वह अध्येता है सैन्य मनोविज्ञान में, राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच फैंस की, प्रेसिडेंट है CIPSRF छत्तीसगढ़ इनिशिएटेड पीस स्टडीज एंड रिसर्च फाउंडेशन। उन्होंने MSc PhD PDoc किया है डिफेंस स्टडीज में। ग्राउंड ऑफ रिसर्च है उनका मिलिट्री साइकोलॉजी। कोर एरिया ऑफ रिसर्च है माओइस्ट इंश्योरेंसी एंड काउंटर insurgency, defense problem analysis, man management techniques in conflict zone. She has research experience of 14 years and invented the psychophysiotechnology. Dimension of works have captured and surrendered Maoist security forces, pupil of conflict zone. He interviewed at least 15 to 20 माओवादियों के साथ उन्होंने इंटरव्यू लिया है and 412 security personnel, officers, doctors, teachers, administrative, और ये ट्राइबल्स में जाके बहुत काम करती हैं। इनके बहुत सारे काउंसलिंग लेक्चर जो है CRPF एंड BSF में इन्होंने दिए हैं। ही लेक्चर्ड कोसा छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया कमांड एंड स्टेट पुलिस एकेडमी, delivered more than 250 lectures focused on various burning current issues for youth, women as keynote speaker, special guest, resource person on various virtual and non-virtual national platforms, performed on Magna Sutra formula for post-COVID state release, and visited more than 822 village dense moist affected zone। बहुत अंदर तक जंगलों में जाके वो काम करती हैं इन माओवादियों के बीच में। It is also an inspiration and published more than 35 research papers in national and international journals, attended 30 national and 3 international conferences as resource person, published 3 books, 128 print media coverage of research and editors, and working for educational and skill development of dropout students of moist conflict zones। उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में उनको किस तरीके से वापस अब इसमें लेकर आना, नॉर्मल जोन्स पे लेकर आना, उस पे ये काम करती है। वर्किंग फॉर इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन ऑफ नॉर्थ बस्तर, member of IDSA Indian Defense Studies and Analysis New Delhi, national chairpersons जयंती केस्ट्रा अध्यादन स्मूथ फैंस की मेंबर हैं, डायरेक्टर ऑफ CIPSRF छत्तीसगढ़ इनिशिएटेड पीस स्टडीज एंड रिसर्च फाउंडेशन रायपुर, और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जैसे कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर ICSSR न्यू दिल्ली, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यंग साइंटिस्ट CG फ्रॉम छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तृतीय राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्मान झारखंड का, बेस्ट डॉटर अवार्ड मिला है, निर्भया सम्मान मिला है, इंस्पायरिंग वुमेन सम्मान मिला है, अपराजिता सम्मान मिला है, समर्पण से मिला है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड। वेलकम वर्णिका, हम आपको सुनने के लिए बहुत तत्पर हैं और मैंने पहले भी तुम्हें सुना है, बहुत अच्छा बोलती है। वेलकम। एंड मैं कहना चाहूंगी हमारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस से कि प्लीज ध्यान से वर्णिका को सुने, बहुत अच्छा और बहुत इंस्पिरेशनल जो इनका लेक्चर होता है, बहुत बढ़िया होता है। वेलकम। अनम्यूट कर ले वर्णिका आप अपने आप को। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। यस जी नमस्कार मैम, सभी नमस्कार। गुरुजनों को सादर प्रणाम। और मैम आज आपके प्रत्येक शब्द जो आप परिचय दे रहे थे, हर शब्द में मुझे अपने लिए प्रेरणात्मक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था।
माहेश्वरी मैम का, आपका, सभी गुरुजनों का मैं सादर प्रणाम करती हूँ और इस आभासी माध्यम में होने वाली कार्यशाला में उपस्थित प्रत्येक सुधीजन, प्रत्येक प्रबुद्ध वर्ग का सादर अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि एक बहुत सुंदर और सार्थक विषय जिसकी वर्तमान में प्रबल आवश्यकता है, ऐसे विषय पे ज्वलंत और समसामयिक विषय पे हमारे विज्ञान महाविद्यालय के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये अपने आप में इस बात की प्रामाणिकता है कि विज्ञान महाविद्यालय सदैव से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ही चरितार्थ हो जाता है कि साइंस कॉलेज प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले यूथ इज इक्वल टू मेरा टॉपिक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूथ। यहीं पे आज का टॉपिक, आज का विषय जो मुझे प्राप्त हुआ है वो आरंभ में ही चरितार्थ है। अब एक बात कि अभी हमारा देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। विश्वगुरु, जैसे आप समस्त मेरे गुरु हैं। गुरु वो जो समस्त विश्व को एक सही दिशा और दशा प्रदान करता है। तो जब विश्वगुरु बनने जा रहा है तो उस समय बहुत सी तैयारियों की आवश्यकता होती है। कैसी तैयारियां होंगी, वो क्या तैयारियां होंगी और उन पे किस प्रकार अमलीकरण किया जाएगा या उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, ये सभी बातें इस विषय के अंतर्गत आती हैं और इनको अमली जामा पहनाने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किनको अपने किस प्रकार से दायित्वों का निर्वहन करना होगा, ये बातें समस्त तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि चूंकि डिफेंस की स्टूडेंट हूं तो बताना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए या किसी भी राष्ट्र का निर्माण जब हम देखते हैं तो दो ही तत्वों से होता है। एक होता है टेंजिबल एलिमेंट और दूसरा होता है नॉन टेंजिबल एलिमेंट्स, यानी कि मूर्त और अमूर्त तत्व। क्या है ये मूर्त और अमूर्त तत्व? मूर्त तत्व वे जो कि स्थायी हैं, जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और अमूर्त तत्व वे जो निरंतर परिवर्तनशील हैं, जिनमें हमेशा परिवर्तन स्वाभाविक है और उनका स्वरूप आकार बदलता रहता है। तो मूर्त तत्व हैं किसी देश का नक्शा उदाहरण के तौर पे, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परंतु अमूर्त तत्व क्या है? अमूर्त तत्व हैं उस राष्ट्र में उपस्थित लोग और उनके विचार। यदि मूर्त तत्व वहां का भौगोलिक आवरण है तो अमूर्त तत्व उस राष्ट्र में उपस्थित वैचारिक प्रतिबद्धता है। तो आज के विषय के लिए जब हम देखते हैं तो देखेंगे कि यही वो महती आवश्यकता थी जबकि हमारे देश को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तर्ज पे हमने आरंभ किया साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कदाचित इस विषय को लागू करने वाला ये एक विश्व का प्रथम देश साबित होने जा रहा है। अब यदि हम कहें कि मिलिट्री साइकोलॉजी की भाषा में जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब हम आगे बढ़ते हैं और परिवर्तन लेते हैं साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुल मिला के एक मोटे मोटे तौर पे ये क्या दिखाई देता है? मैनेजमेंट टेक्निक की उत्कृष्ट विद्या, यानी कि मानव प्रबंधन तकनीक की एक उत्कृष्ट कला जो होगी वही साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब कि देश के अमूर्त तत्वों को संगठित करके हमको आगे बढ़ाना है एक वैज्ञानिक सोच के साथ में। उद्देश्य क्या होगा? इसके उद्देश्य क्या है? क्यों अचानक से इस विषय की आवश्यकता आन पड़ी? मैं 4-5 दिन से जब से मैम ने ये टॉपिक दिया था सभी लोगों के, चूंकि स्वभाव एक शोधार्थी का है और जीवन पर्यंत ईश्वर से यही कामना है कि शोधार्थी का ये स्वभाव हमेशा मन में काबिज रहे। तो इस वजह से जब इसके उद्देश्य को जानने का प्रयत्न किया कुछ साक्ष्यों के माध्यम से, कुछ लोगों के मध्य घूम करके, तो ये पता चला कि विज्ञान को समाज से जोड़ना पहला उद्देश्य है, लेकिन उसकी विधि 3 होगी। पहला,
विज्ञान विज्ञान संपर्क, दूसरा विज्ञान समाज संपर्क, और तीसरा समाज विज्ञान संपर्क। इसके विषय में हम आगे में जानेंगे। दूसरा, वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तीसरा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारित संस्थानों को बढ़ावा देना। चौथा, समाज के मार्जिनलाइज्ड लोगों को ऊपर लाना, उनको ऊपर उठाना और समाज को एक रूप बनाना, तभी सबका एक साथ होके विकास होना संभव हो पाएगा। इन 4 उद्देश्यों के अतिरिक्त जो समाज जीवन में घूम के एक उद्देश्य जो मुझे बिल्कुल एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते सही लगा, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, जिसे छोटे रूप में या सूक्ष्म रूप में SDG कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि आज हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में भी देखते हैं, तो मैं जिन जनजातीय क्षेत्रों के विषय में मैम अभी परिचय दे रही थी, उन क्षेत्रों में जब मैं जाती हूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति बाहुल्य और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से परिपूर्ण है। तो ऐसी अवस्था में यदि हमारे किसी भी क्षेत्र के युवा के मन में संपोष्य विचार नहीं होंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना नहीं होगी, तो वो दिन दूर नहीं कि इनका अनुचित दोहन होगा और कोई भी विध्वंसी ताकतें हमारे ऊपर शासन करेंगी। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ रही है। ये तो अभी तक हमने उद्देश्य के विषय कैसा करें। अभी there is some disturbance. Das madam, अभी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दास मैडम, हेलो दास मैडम, बोली कि मैं सॉरी वर्णिका, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा। दास मैडम, पात्रा मैडम, हाँ, मैं चेक करती हूँ ये कहाँ पे डिस्टर्ब हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, कंटिन्यू वर्णिका, कंटिन्यू प्लीज। तो अभी तक हमने देखा कि इसके 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से थे। अब इन 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए युवा ही क्यों आवश्यक हैं और इस विषय की क्यों आवश्यकता हो रही है, अचानक से ये क्यों परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, तो इसको ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब हम किसी भी बात को एक सतही तौर पे तो ओके कह देते हैं, परंतु आंतरिक तौर पे तभी उसको सहन कर पाते हैं जब हम उस तथ्य को स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टेंस दे पाते हैं। और वो एक्सेप्टेंस तभी संभव है जब थ्योरी और प्रैक्टिस में यानी कि तत्व और आचरण में भिन्नता समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं हम। आरंभ से शुरू करने से 0 से 1 की ओर जाने से या 0 से 10 की ओर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो 10 से 0 की ओर उतरने में कम तकलीफ महसूस होगी। अतएव विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी वस्तु के बारे में अच्छा अवलोकन करना, तथ्यपरक अवलोकन करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी जानकारी, विश्लेषण से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको सही नीति और रीति के रूप में लागू करना। और सही रीति और नीति जब इस राष्ट्र में लागू होगी तभी तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो कुल मिलाके विज्ञान, वी प्लस ज्ञान इज इक्वल टू ऐसा ज्ञान जो विकास की ओर लेकर के जाए। लेकिन लेकर के कौन जाएगा? ट्रेन, बस या गाड़ी या पैदल लेके जाने वाले वही अमूर्त तत्व होंगे। और तेज गति से कौन लेके जाएगा? उन अमूर्त तत्वों में उपस्थित युवा होंगे और उनके विचार होंगे। तो ये विज्ञान यानी विकास की ओर ले जाने वाला ज्ञान। तो इस ज्ञान से विकास की ओर बढ़ने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट, वर्णिका अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, समाज क्या है? समाज है एक जो व्यक्तियों के मध्य
जो कई सारे व्यक्ति होते हैं उनके मध्य संबंधों का व्यवस्थित रूप है, जो एक अच्छे व्यवहारों के साथ, आपसी सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यदि विज्ञान से तात्पर्य विकास करने वाले ज्ञान से है, तो समाज से तात्पर्य है समविवेकी व्यक्तित्वों का संगठन, समविवेकी या हम कह सकते हैं समज्ञानी व्यक्तियों का एक संगठन। ज्ञान जो है वो हमारी प्रवृत्ति है, तो समाज उस प्रवृत्ति का या उस एक्शन का आधार है। सामूहिक क्रियाकलापों का निश्चित ही असर हमारे जो कृतित्व हैं, जो हमारी आदतें हैं, उन पर होता है। हम जो अपने परिवेश में, और इस समाज का मूल आधार कौन है? इस समाज का मूल आधार है युवा। युवा कौन? जो वायु की दिशा बदल सकते हैं और देश को गति प्रदान कर सकते हैं। और इन युवाओं का होता है जिनका एक्शन और परसेप्शन दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए परसेप्शन मीन्स सोच में तर्क और आचरण में मर्म। मैंने एक सुंदर पंक्ति कही जो अभी अभी बनाई कि सोच में तर्क और आचरण में मर्म। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू हो पाएगी युवाओं के मध्य। यदि हम अपनी सोच में तर्क और आचरण में मर्म नहीं रखेंगे, तो सबसे प्रमुख जो हानि हमको सहन करनी पड़ेगी, कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति नहीं बने, तो उस स्थिति में हम व्यक्ति नहीं अपितु रोबोट बन जाएंगे, एक मशीन बन जाएंगे। और मशीन को ये पता नहीं होता है कि वो कब आत्म विध्वंस के साथ समाज का भी विध्वंस करने आगे बढ़ जाती है। तो इसके लिए समाज में कुछ चीजें महत्वपूर्ण होंगी कि जीवन के स्वरूप को समझ करके रीति और नीति का निर्धारण करना क्या है। में जाते हैं, कई प्रकार के क्षेत्र हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। आज जब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें या समग्र देश के संदर्भ में बात करें, तो 4 प्रकार के क्षेत्र हमारे सामने आते हैं। एक, वे क्षेत्र जो अंतः ग्रामीण क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं। दूसरा, वे क्षेत्र जो मध्य क्षेत्र हैं। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत मैं उन युवाओं को लेती हूँ जो नए बने जिले हैं, अभी विकास की ओर गतिशील है, वहां का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका है, परंतु अभी भी वो मेट्रो सिटीज की तुलना में थोड़े से अभी पटरी पे चढ़ने को तैयार हैं। तीसरा वो क्षेत्र होता है जो कई वर्षों पहले तो जिले बन चुके हैं या संभागीय स्तर पे आगे बढ़ चुके हैं, परंतु अभी भी वहां पे बहुत सारी सुधार की या आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े बड़े क्षेत्र, कलकत्ता या बड़े बड़े क्षेत्रों की हम बात करें जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आ जाती है कि यहाँ पे जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने जाएंगे, तो जैसे मैं सबसे पहले उदाहरण देती हूँ, यदि 5 विधियां होंगी। एक होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने से क्या महत्वपूर्ण फायदे होंगे। सबसे पहला, जागरूकता। दूसरा, क्षमता का ज्ञान। तीसरा, समस्याओं की पहचान। पांचवा,
चौथा, समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं की आपूर्ति, अंत में लाभों का स्थानांतरण। यदि हम जागरूकता की बात करते हैं तो उस समय विज्ञान और विज्ञान का संपर्क आवश्यक होगा। यदि हमको क्षमता का ज्ञान कराना है तो विज्ञान और विज्ञान का संपर्क आवश्यक होगा। यदि समस्याओं की पहचान करानी है तो समाज और विज्ञान का संपर्क आवश्यक होगा। समस्याओं का समाधान करना है तो समाज और विज्ञान का संपर्क आवश्यक होगा। आवश्यकताओं की आपूर्ति करनी है तो विज्ञान और समाज का संपर्क आवश्यक होगा। ये समाज और विज्ञान, विज्ञान और समाज और विज्ञान और विज्ञान, इन तीनों में अंतर ये होता है कि जैसा हम अपने कॉलेज में बैठते हैं, अपने परिसर में बैठते हैं जहाँ पे हमारा अध्ययन केंद्र है, इस अध्ययन केंद्र को जैसे योजना के क्रियान्वयन के हेतु साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेवलपमेंट के लिए जैसे ASI डेवलप किए गए हैं, एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, इन इंस्टीट्यूट्स में जब हम बैठते हैं तो यहाँ पे जागरूकता और क्षमता का ज्ञान, ऐसे 2 लाभ क्रियान्वित होंगे। इससे जो बच्चे सीखेंगे, जो उनको अपनी क्षमता का ज्ञान होगा, उन क्षमताओं के ज्ञान के जरिए, जैसे मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ी हूँ, इसी कॉलेज में पढ़ के मुझे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक सोच और तार्किक सोच डेवलप हुई है, परंतु मर्म भी इसी कॉलेज से मिला कि विज्ञान का सोच विध्वंस के लिए नहीं बल्कि मर्म के लिए है, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ाने के लिए है। तो जब इस जागरूकता और क्षमता का ज्ञान लेकर के मैं जब जनजातीय क्षेत्रों में पहुंची, तब वहां पे समाज से मेरा संपर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार से समाज और विज्ञान का संपर्क स्थापित होने से समस्याओं की पहचान करने में सुविधा उत्पन्न हो पाई। समस्याओं की पहचान के बाद समस्याओं का समाधान जब उनका अवलोकन किया और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय में दी, तो आज वो समस्याएं अपने समाधान की ओर अग्रसर हो रही हैं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। चेरपाल जैसा एक क्षेत्र है जो शायद हम में से किसी ने सुना भी नहीं होगा। बीजापुर के एकदम अंदर वाला क्षेत्र दुआलीपारा से पहले पड़ता है, मिंगाचल नदी के पूर्व। भौगोलिक दृष्टि से यदि आप मेरे उद्बोधन के उपरांत अपना मैप देखेंगे तो जरूर समझ पाएंगे, छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो। चेरपाल गांव में वहां पे महिलाओं की प्रधानता है और महिला प्रधान वहां का जनजातीय समाज है। वहां पे सब महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। महुआ के जरिए महुआ का लड्डू वगैरह ये सब निर्मित करके वो उत्पाद का विक्रय करती हैं। परंतु मेरी इच्छा हुई, वो सी मार्ट करके एक क्षेत्र था जो बीजापुर में था, स्थानीय बीजापुर मुख्यालय में था। तो बीजापुर मुख्यालय में जब मैं वहां पे महुआ के लड्डू देखती हूँ तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनकी गुणवत्ता का जिक्र होता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सामान्यतः शोधार्थी बीजापुर से होके वापस आ जाते हैं, परंतु जिज्ञासा थी कि मुझे प्रेरणा दी और मैं बहुत अंदर जाती गई। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। इस परिपाटी को लेते हुए जब चेरपाल के क्षेत्र में पहुंची तो वहां पे देखा, जो वहां की सरपंच बिटिया थी, बहुत कम उम्र की थी, 18 या 19 साल की रही होगी, युवा, परंतु वो 10वीं के बाद ड्रॉप आउट थी। वहां के अधिकांश बच्चे 10वीं के बाद स्कूल या महाविद्यालय तो बहुत दूर की परिणति है, परंतु स्कूल का और आगे का रुख, हायर सेकेंडरी का रुख नहीं देख पाए थे। तो सी मार्ट का जो व्यक्ति हमारे साथ में गया था वो भी एक युवा छात्र था, बिलासपुर से पढ़ा हुआ छात्र। वो मुझे लेके गया, उसने कहा मैम शहरी क्षेत्रों में तो ये समस्या बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी तारीफ कर दिए, बहुत पसंद आया, पर एक दुखद पहलू जिससे मैं आपको अवगत कराता हूँ, यहाँ पे महुआ की खेती हो रही है। जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लेके आता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनको मिक्स करके लड्डू बनाने की विधि बताता हूँ, तो ये दीदियां उसको स्वीकार्यता नहीं दे पाती हैं। तो मैंने पूछा क्यों? इससे तो उनका काम जल्दी हो जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, तो वो क्यों स्वीकार्यता नहीं दे पा रही हैं? उनके साथ कुछ पल मैंने बिठाया, वो पैर से ऐसा उसको प्रेशर देके मेल्ट करते थे, तो बहुत समय भी लगता था, ताकत भी लगती थी। तो उन्होंने बताया शायद ये मशीन हमारे साथ जस्टिफाई नहीं हो सकेगी। उनको लगता है कि ये बाहरी कोई ऐसी चीज है जिससे उनके साथ छल कर दिया जाएगा। उनको उनका सही मापदंड या सही मानदंड नहीं मिल पाएगा उसके जरिए, ये कोई छल करने वाली मशीन है। तो आप यदि ये सोचिए
उस बालक की जगह यदि वहां के ड्रॉप आउट बच्चे को हम जैसा कोई बच्चा, विज्ञान महाविद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा ला करके या इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंटिफिक डेवलपमेंट के जरिए वहां पे ले जाके प्रशिक्षित करेगा, तो सबसे पहले तो विश्वसनीयता का बंध जरूरी है, जिसके जरिए वो वैज्ञानिक सोच को एक्सेप्टेंस दे सके। जहां से मेरा आज का ये उद्बोधन आवश्यक आरंभ हुआ था कि सबसे पहले जो चीज आवश्यक है वो है विश्वास, दूसरी आवश्यक चीज है स्वीकार्यता, और स्वीकार्यता के लिए आत्मीय बंध यानी मर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कुछ और आगे के देश में कुछ और आगे के परिवेश में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं दंतेवाड़ा बेल्ट के, ये तो मैं सुदूर ग्रामीण जनजाति क्षेत्र की बात बताई, थोड़ा मध्य क्षेत्र में जिले से बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र जहाँ पे आवागमन की भी सुविधा है, उस क्षेत्र की जब मैं बात बताती हूँ तो वहां की एक युवा बिटिया थी और कुछ बालक थे। उनको ये अभी थोड़ी देर पहले, मेरे से पहले मैंने अंत में ज्वाइन किया था वो लेक्चर मैम का, तो एक डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। जब हमारा देश डिजिटलाइजेशन की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है, आज हम अपनी पीठ भी थपथपाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत सुंदर भी लगता है। लेकिन उस डिजिटलाइजेशन की परिपक्वता या विस्तार वहां पे ना पहुंच पाने के कारण बच्चियां अपनी स्कॉलरशिप नहीं ले पा रही थी और उन्होंने पढ़ाई आगे की छोड़ रखी थी। ऐसा एक दो नहीं, पूरी 20 से 30 बच्चियां थी जिनको अपने आधार नंबर या उनके जरिए ये सारी चीज या डॉक्यूमेंटेशन समझना नहीं आ पा रहा था। तो वहां पे भी कुछ बच्चे जब गए और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन किए, तो आज उस क्षेत्र में पूरी बच्चियां अपने स्कॉलरशिप का फायदा ले रही हैं और ना जाने कितने लोगों को इसका पुण्य मिल जा रहा है। जो साइंस यानी टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया, आज कितनी बच्चियां आगे पढ़ रही हैं और आगे विकास की इबारत गढ़ रही हैं। अब मैं बात करती हूँ एकदम ऐसे जिले की जो बहुत दिनों से जिला बन चुका है, लेकिन वहां की बच्ची को चूंकि टेक्नोलॉजी आती है तो उसने एक नहीं बल्कि पूरे गांव का कल्याण कर लिया है। इसी विज्ञान महाविद्यालय की पढ़ी हुई बिटिया है, वो सरायपाली के जामपाली वाले क्षेत्र में पूरे गांव के गांव का पूरा महिला समिति का स्व सहायता समूह का एसएसजी जिसको बोलते हैं, उसका पूरा ना केवल खाता खुलवाती है, उनका आवेदन पत्र लिखती है। उनको एक एक महिला को, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है परंतु वो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेट कर लेती है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये कागजी फॉर्म भरेंगी, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ये बहुत बड़ा मतलब बहुत खुशी की भी बात थी और शॉक्ड होने का मोमेंट था कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कागज वेस्ट मत करिए, आप गूगल फॉर्म भरा लीजिए। तो ये होती है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज द रियल मीन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी वजह से समाज पर विज्ञान का प्रभाव नहीं, विज्ञान पर भी समाज का प्रभाव है और इसको हमें स्वीकार्यता देनी होगी। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था जो अभी की हमारी राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण पहलू है, वो हमारी मजबूत नियम है और इसी वजह से एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट डेवलप किए गए हैं। नियमित 10 दिवसीय कार्यशाला सभी को करनी है, उपयुक्त बजट भी उपलब्ध कराए गए हैं। हाइपोथेसिस यही होगी कि ग्रामीण नवाचार जो है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हमारा देश तो गांव का देश है ना, शहरी क्षेत्र आगे बढ़ जाए तो ऐसा होगा कि पुस्तक का कवर अच्छा हो गया परंतु अंदर के पन्ने खाली रह गए, तो पुस्तक का तो शाब्दिक रूप से चित्रण ही व्यर्थ हो गया। इसी वजह से ग्रामीण नवाचार की स्थापना हो सकेगी, हमारे जनजातीय भाई बहनों तक के नवाचार की स्थापना होगी। एमएसएमई जो छोटे और लघु उद्योग संस्थान है, जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, केवल एक महुआ का जिक्र किया, ऐसा बहुत सारा जिक्र है। कभी और मैडम मुझे अनुमति देंगे तो मैं जरूर आऊंगी और प्रात्यक्षिक अनुभव के साथ आपसे साझा करूंगी। कदाचित ज्ञान के माध्यम में तो मैं आप सबकी एकदम अनुजा हूँ, पर अनुभव साझा करने जरूर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अल्प विराम देती हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू मैम। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। If anyone has any questions? मैं पूछना चाहूंगी वर्णिका, जब तुम इतने अंदर अंदर जाके तो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करती होंगी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है जो करना चाहेंगे उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आप फेस कर सकते हो, किस तरीके से लोगों से डील करना चाहिए, एक्चुअल में उनसे बात कैसे करें। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, पर अंदर जो सुदूर गांव में जो तुम पहुंच रही हो, वहां लोगों से कैसे बात करें, उनको हम कैसे कन्विंस करें कि हाँ हमारे हम जो कह रहे हैं उनको मानो, वो कैसे करती हो? जी मैम, सबसे पहले तो उनको अपने से अलग मानना बंद कर देना चाहिए। जब हम ऐसा मानेंगे कि वो हमारे ही परिवार के एक व्यक्ति हैं जिनसे हम मिलने जा रहे हैं करके, तो आंखों की भाषा सर्वोत्तम भाषा होती है। आपकी अभिव्यक्ति ये परिचय देती है कि आप उनको आर्टिफिशियल तौर पे अपना मान रहे हैं क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, या आप उनको सचमुच आत्मीय मान के गले लगा रहे हैं। तो मिनट भी देर नहीं लगती जब वो आपको अपना बनाते हैं। हाँ, उनको तर्क थोपना नहीं है, यानी कि इम्पोजिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए अपनी बातों में कि हम पढ़े लिखे हैं, हम आपको आगे बढ़ाने आए हैं। ये भाव नहीं, हम साथ में चलने आए हैं, आपको एक नई बात बता रहे हैं। उनके प्रति आप जितने सहज होंगे वो आपको उतनी ही जल्दी स्वीकार्यता देंगे। सही बात है, ये बात ठीक है कि हमको किस तरीके से उनसे बात करना है और उनके होके बात करना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ वर्णिका, जब अंदर जी। जाते होंगे तो माओवादी के साथ में, तो उनकी तो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना, ट्राइबल लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है, और उनका समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है जैसे अंदर जाके करते हैं। अगर हम सोचे कि छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी बोले, तब भी थोड़ा अलग होती है उनकी लैंग्वेज। तो कैसे इंटरेक्ट करते हो जाके वहाँ? जी मैम, जैसे कि बहुत शुरुआत के दिनों में, जैसे आप सभी को पता है, पीएचडी के दिनों से थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि शुरू से जिज्ञासा थी और मैं एकदम कोर एरियाज में जा रही थी। तो उस समय तकलीफ होती थी कि लैंग्वेज कैसे पहचानूं या ये क्या बोल रहे हैं, पर इतना भी कठिन नहीं था मैम, हाव भाव से समझ आने लगता है। उसके उन्हीं के बीच में एक दो पढ़े लिखे व्यक्ति भी रहते हैं जो हिंदी भाषाई भी अच्छे से होते हैं, तो उनको हम कम्युनिकेशन पाथ के रूप में भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विज्ञान महाविद्यालय में ही वहां से पढ़ने आए हुए हैं, ऐसे बच्चों को साथ में लेके जाते हैं ताकि हल्बी भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं या गोंडी भाषा बोलने वाले जो बच्चे हैं उनसे सीख लें। जो वहाँ के शिक्षक हैं वो सहायता करते हैं, जैसे शिक्षा कर्मी वाले शिक्षक हैं, ये सभी जो शिक्षक गण होते हैं, इनसे हम कुछ ग्रामेटिकल वर्ड जो सामान्य एक दूसरे से कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, वो कुछ हम लिख के लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं। जैसे उस्ता, तिदा, उठो, बैठो, ये सारी लैंग्वेज पूछ लेते हैं। और एक बहुत सुंदर सी बात मैम जो मैं उल्लेखित करना भूल गई थी, हमारे विज्ञान महाविद्यालय से करीब 6 साल पहले एक रैली गई थी, माट संगोय दकाट करके, आओ मिलकर साथ चलें करके। इस रैली के जरिए हम अंदर अंदर गांव में गए थे और वहां के बच्चों को प्रोत्साहित करके आए थे कि यहाँ पे ऐसा करना, मतलब पढ़ाई को यदि आप छोड़ देंगे तो वो वापस ड्रॉप आउट होके या तो कुछ अन्यत्र जगहों पे जुड़ जाते हैं, या बोलते हैं दिमाग ही सब कुछ है। और माओवादी ताकतों के लिए भी 18 से 25 वर्ष के युवा ही क्रीम होते हैं। यही वो क्रीम एज होती है जब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करने का जो बाध्यता भी दी गई है, मतलब एक उसमें आहार्यता जो दी गई है, वो भी यही है कि ग्रेजुएशन लेवल में ही पीएससी या यूपीएससी, क्योंकि ये क्रीम एज है मैम, इसी समय में लोग लेकर के उनको चले जाते हैं जो विध्वंसी ताकतें होती हैं। तो यही समय है जब ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको बचाना है। मुख्य चीज क्या होती है मैम, हम तर्क का प्रस्तुतिकरण सही नहीं कर पाते हैं। ये मैं आरंभ से ही कह रही हूँ, शोध के शुरू से ही कह रही हूँ कि तर्क को और जहाँ पे प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं वहां पे हम इम्पोजिव हो जाते हैं, थोपने का प्रयास करते हैं। एक ओरछा करके जगह थी, वहां पे एक डॉक्टर जो थे, दो डॉक्टर गए थे यहाँ शहरी क्षेत्रों से, दोनों की क्रियाविधि में इतना अंतर था। वो गोदना होता है मैम, माल न्यूट्रिशन की वहां बहुत प्रॉब्लम थी, पहाड़ से आते थे वो लोग नीचे उतर के,
डूंगा क्षेत्र से। तो मुझे उन लोगों ने बताया, क्योंकि दोनों पक्षों से मेरी बात हुई, तो बोले ये डॉक्टर ना हमारे पूजा पाठ में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये हमको पसंद नहीं आते। तो डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर यादव से, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उनको माल न्यूट्रिशन से, वो छोटे छोटे बच्चों को गोदना कर देते थे, तो उससे उनको ब्लड में कई बार इन्फेक्शन हो जाता था। ये मैं उनको बताया कि ये गलत है, मत करो। पर वही जब कुछ ज्योति नायक या कोई एक बच्ची थी, वो गई वहां पे आंगनबाड़ी के जरिए, वो कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थी, पर उसने बोला कि ये गोदना करना है, पर इतने बड़े होने के बाद करना है, और वो वाले भगवान के जरिए और अच्छे से करेंगे हम लोग। इस तरीके से उनको आत्मीय तौर पे समझाई, और ये चीजें खाओ तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो उसका जो समझाने का तरीका था, उससे उन्होंने उस माल न्यूट्रिशन के चीज को मतलब स्वीकार्यता दी कि किस प्रकार से बच्चों का कुपोषण दूर किया जा सकता है। तो उस डॉक्टर का इतना विरोध हुआ कि उसका तो गांव में आना बंद कर दिया गया। अब वो यहाँ आके इंटरव्यू देंगे कि माओवादी क्षेत्रों में बिल्कुल मत जाना, ट्रांसफर मत लेना, और वहां ड्यूटी मत करना, ऐसी तमाम बातें होंगी। कुछ लोग ट्रांसफर रुकवाएंगे और परिक्रमा करेंगे। तो ऐसी चीज नहीं होती है। समझ के वहां पे सिर्फ ज्ञान काम नहीं आता, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम आती है। अच्छा, जो ये जो युवा की बात कर रहे थे 25 साल की, तो तुम्हारा जो है मिलिट्री साइकोलॉजी पर है ना? जी तो ये जो युवा जो जुड़ जाते हैं इस तरह से माओवादिस्ट में, तो क्या इनकी साइकोलॉजी का भी स्टडी करने की कोशिश की कि क्या इनको किस तरह से साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड तरफ चले जाए, या इनको वापस कैसे लाया जा सकता है? इस तरह से कुछ हुआ है तुम्हारे साथ में? हाँ, दो प्रकार की बातें उभरी मैम आपके प्रश्नों में। पहला तो कैसे चले जाते हैं, दूसरा कैसे वापस लाया जाए। तो जो ये 18 से 25 साल के युवा होते हैं ना मैम, इनके पास जैसे हम बोलते हैं ना, जहाँ पे पावर वैक्यूम होता है वहां पे अपराध बढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे वैचारिक वैक्यूम होता है। अब कोई व्यक्ति 10वीं पढ़ लिया है या 8वीं पढ़ लिया है, उसके बाद यदि वो खाली रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है करने के लिए, वहां के बच्चों में बहुत अच्छी अच्छी कला है मैम, बहुत सुंदर सुंदर कला है। ऐसा कि मतलब एकदम अर्जुन जैसा लक्ष्य वाला। वहां के बच्चे, जो अभी दोनों बेटियां फिलीपींस गई थी खेलने के लिए, बताया जाता था कि बड़े शहरों की जो बेटियां गई थी शाम को मॉल या कहीं पे घूमने जाती थी, पर वो जो दोनों बेटियां गई थी उसूड़ क्षेत्र की, बीजापुर के अंदर के, तो वो दोनों बेटियां लगातार प्रैक्टिस करती थी और मेडल भी जीत के आई। तो अंतागढ़ की जो महिलाएं साड़ी पहन के, उन्होंने कह दिया कि हम ट्रैक सूट में वॉक नहीं करेंगे, सूरत में मैराथन वॉक नहीं करेंगे, हम साड़ी में करेंगे। उन्होंने साड़ी में मैराथन जीत लिया। तो बात ये होती है कि जो युवा होते हैं, उस समय उनका यदि वैक्यूम हो जाता है, उनको सही समय पे कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता, तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और इन्फ्लुएंस किन चीजों से होते हैं? जो हमारे शहरी क्षेत्रों के युवा होते हैं, ये लोग नेटफ्लिक्स की मूवी से या वेब सीरीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। वहां के लोगों के लिए नेटफ्लिक्स, अब हो सकता है कुछ दिनों में वो वहां भी पहुंच जाए, परंतु वहां के लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं, सांस्कृतिक प्रचार से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको लोग सिनेम कहते हैं। मैंने सोचा वो सिनेमा को सिनेम कह रहे हैं, तो वो मेरी अल्पज्ञता थी। वो सिनेम दरअसल सिनेमा नहीं था, चेतना नाट्य मंच था, जो इतना प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करते हैं कि थोड़ी देर में सभी सम्मोहन विद्या के शिकार हो जाते हैं। तो वो सब देख करके यूनिफॉर्म का क्रेज उनके यहाँ बहुत है। वो किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने में गुरेज नहीं करते, बस उनको एक नेतृत्व चाहिए है। तो क्यों माओ का विचार वहां जाए? क्या स्वामी विवेकानंद को हम नहीं पहुंचा सकते वहां? क्या सुभाष चंद्र बोस नहीं जा सकते? कहीं ना कहीं कमी हम सबकी ओर से भी है, ऐसा मुझे लगता है मैम। और वापस आने में देर नहीं लगेगी। जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी वहां जाएगा, जैसे दुआलीपारा में, वहां पे युवाओं ने मिलके, अंदर जिस बैंड एरिया के युवाओं ने मिलके, शायद मैं एक सार्वजनिक मंच पे कह रही हूँ, लेकिन बैंड एरिया के युवाओं ने मिलके प्रतिरोध का स्वर कर दिया कि हम क्यों नहीं सौर ऊर्जा वाली तकनीकों का उपयोग कर सकते, हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है। होगी सरकार बहुत बुरी होगी, परंतु हमको भी अब टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये हमको अब पहुंचाना है, जब अंदर से भी आवाज आ रही है। तो ये वाली बातें हैं मैम। बहुत अच्छे से तुमने स्टडी किया है उनकी साइकोलॉजी भी, और बहुत अच्छा काम है। थैंक यू वनिका। धन्यवाद। Very well spoken, ma'am.
You are a firebrand lady with clarity of thoughts, objectives, and a very mellow voice. We have long focused on the importance of IQ for our youth, but current scenario requires that we have to focus on emotional and social quotient of the youth as well. Otherwise, the development of science and technology may prove deleterious in the absence of sense of social responsibility. Thank you so much for your talk, ma'am. I request Dr. Kavita Das, ma'am, to extend vote of thanks. धन्यवाद वर्णिका, बहुत अच्छे से ये समझाने के लिए कि सिर्फ शहरों में ही जो है विज्ञान सीमित न रह जाए, इसको हमें समाज तक और बहुत अंदर सुदूर गांवों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें विज्ञान और समाज के बीच एक संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम जो है सिर्फ शहरों में अपना साइंस एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे और गांव के लोग इससे वंचित रह जाएंगे, जो कि हमारा देश की बहुत जरूरी वो है। और वहां की पीढ़ियों को हमें उस साइंस से रूबरू करवाना है, ताकि वो इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जैसे तुमने कहा कि वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं या वो उसको अपनाना नहीं चाहते, तो कैसे उनको हम बताएं कि नहीं ये आपके लिए सुविधाजनक है। तो इसी को हम कह सकते हैं विज्ञान और समाज के बीच एक संबंध स्थापित करना, और सिर्फ शहरों में नहीं गांव गांव तक इसको पहुंचाना। और इसके लिए जरूरत है आपके जैसे जुझारू लोगों की। तो उनके साथ मैं चाहती हूँ हमारे स्टूडेंट्स भी जो है वो जुड़े, आपसे प्रेरणा लें और जुड़े, ताकि हम जो है गांव गांव तक इस विज्ञान और समाज के बीच संबंध स्थापित कर सके, ताकि हमारे सुदूर गांव के लोग भी जो है इन सब जो वैज्ञानिक से हमारे को मिल रहा है, इस विज्ञान को लाभान्वित हो सके इन सब को, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और समाज के साथ संबंध स्थापित कर सके, हमारे साथ सच हाथ से हाथ मिला के चल सके। तो हम हमारे पास एक्चुअल में हमें जरूरत है कि हम उन तक ये सब टेक्निक या तकनीकी जो है उन तक पहुंचाएं और उनको समझाएं और उनको जोड़ें समाज के साथ। तो विज्ञान और समाज को किस तरीके से जोड़ा जाए और अंदर गांव तक इसको किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसके लिए आप जो काम कर रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये सब बताया कि किस तरीके से समाज की समस्याओं को शासन तक पहुंचाए और उनको किस तरीके से लाभान्वित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्णिका, तुम्हारी जो आपने एक्सपीरियंस हम लोग से शेयर करे और इतना अच्छा वक्तव्य आपके लिए धन्यवाद। आगे भी कभी होगा तो हम लोग जरूर आपको बुलाएंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आपसे प्रेरणा ले सके। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Thank you, ma'am. I welcome our next speaker. I hope sir has joined. Mr. Shashank Sharma, former director, Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy, Raipur. Sir will be talking about social and cultural studies in science. Welcome, sir. I take the privilege of introducing our speaker. Sir has done his Bachelor of Engineering in Chemical Science from Government College of Engineering and Technology, now it's NIT, and Masters of Business Administration in Marketing from Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. He has also done degree in law, LLB, from the same university. Talking about his experiences, he is an ex-director of Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy from 2016 to 2018, appointed by the government of Chhattisgarh. He is a publisher and editor of a daily newspaper, Samachar Pachisa. He has been a journalist for last 25 years, worked as an editor in Deshbandhu Group for 7 years, editor of Swadesh, Raipur edition for 6 years, and worked as a marketing personnel from January 1995 to February 2000 at various positions. Last position he has held as an area manager in Chembon Chemicals Limited, Mumbai. Sir is running a training institute for job seekers and to develop soft skills in them. I welcome you, sir, and invite you for your talk. Thank you so much. I welcome all participants in this webinar. You have given such a length and breadth of my introduction. Simply, I am a journalist and government had appointed me director of Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy. This is the only introduction I have. I heard your some discussions yesterday also, but
after hearing all those 4 science subjects, I was so much afraid because I don't belong directly to the science stream. I consider myself as an idiot who has distracted from a technical subject and joined journalism. So I thank you very much for inviting me to this August webinar. My talk will be bilingual because I was Sanchalak in the Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy. We believe to promote Hindi Bhasha in higher education and especially in science, engineering and medical. मैडम एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री नागार्जुन राष्ट्रीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय ये आयोजित कर रहा है। डॉक्टर रेणु माहेश्वरी जी हैं, अंजलि अवधिया जी हैं को कन्वेनर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा टॉपिक बहुत सिंपल दिखने में लग रहा है, सोशल एंड कल्चरल स्टडीज इन साइंस। बट जब हम साइंस की बात करते हैं, when we talk of science, we generally refer to the science which developed somewhere in the Renaissance period of Europe, that is somewhere in the 14th, 15th, 16th century. And that is concept and theories and formulas, all that evolved, developed and transferred into technology in Europe. But when we talk of social and cultural studies in science, then let me tell you कि हमारा जो भारत है, इसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन रहा है विज्ञान में, ये कोई कम नहीं रहा है। सवाल यह है कि आज हम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को इस तरह से अलग कर बैठे हैं। हमने भाषा को विज्ञान से इतना दूर कर रखा है, खासकर हम अपने देशाज क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो। मैं मानता हूं कि हम जब हिंदी ग्रंथ अकादमी में काम करते थे तो हमने देखा कि जो गांव से पढ़कर आने वाले बच्चे हैं, गांव में केवल हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ हल्बी, गोंडी और भतरा बोलने वाले लोग हैं, सरगुजिया बोलने वाले लोग हैं। इनकी मेधा, इनके इंटेलेक्ट में कोई कमी नहीं होती। समस्या ये होती है कि साइंस के, विज्ञान के जो कठिन शब्द हैं, उनकी कठिन जो भाषा है, उनको समझने में इनको बड़ी तकलीफ है। अभी तो हम बात कर रहे हैं हिंदी की, लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है वह संस्कृत निष्ठ है। और जब हम संस्कृत निष्ठ की बात करते हैं तो हमारे जो संस्कृत के शास्त्रों में, चाहे वैदिक साहित्य हो, वैदिक साहित्य के बाद लिखे गए हुए, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, इनमें जो विज्ञान है, हमने उन विज्ञान को कभी हम अपने मुख्य धारा के विज्ञान से जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने ये माना कि ये बिना आधार की लिखी हुई चीजें हैं। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो चीजें पहले लिखी गई थी वो बाद में जमीन पर इम्प्लीमेंट होती हुई दिखी। चाहे रामायण का वो जो पुष्पक विमान है, उसको राइट ब्रदर्स ने 1911 to 13 में उसको सही करके दिखाया। और ऐसा ही नहीं, चाहे हम महाभारत काल में जो जेनेटिक टेस्ट जो बहुत सारे हुए, टेस्ट ट्यूब बेबीज की जो सारी अवधारणाएं हैं, समस्या ये हुई कि हम आफ्टर 17th 18th सेंचुरी जब हम अंग्रेजों के प्रभाव में आए और हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो हमने विज्ञान और शिक्षा को पूरा का पूरा वेस्टर्न से हम एडॉप्ट कर लिए। और हुआ ये कि हमारा अपना जो देशज ज्ञान है वो कहीं ना कहीं भटक गया। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिन विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फिर से उन्हीं चीजों को कैसे कनेक्ट किया जाए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई है। और इसका मतलब यह है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारे संसाधन, दे टेक ऑल रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, द जल, जंगल, जमीन एंड ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इवन द manpower, what we call human resource, they take all these resources from the society and they earn lot of profit using this kind of resources. But what the society gets from this whole exercise? तो ये concept आया कि we should introduce a corporate social responsibility. Corporate social responsibility means the corporates who are earning
big profits by using the resources should give return back, एक रिटर्न गिफ्ट की तरह सोसाइटी को वापस दे, वो फंड के रूप में दे गवर्नमेंट को, और फंड उनके लिए उनके सोशल डेवलपमेंट के बारे में विचार करे. I think the similar kind of concept we have with the scientific social responsibility also. I believe that the moral obligation of scientific community is somewhere its objective is giving back the benefits the science and technology derived from the resources they get from the society. Now question arises, how? ये बात तो ठीक है कि हमको विज्ञान और समाज को जोड़ना है. समाज को जोड़ना है तो हमें समाज और सांस्कृतिक दृष्टि से एक इंटीग्रेट करना है. हम जानते भी जो SSR है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं. इट इज इंटीग्रेटिंग दिस साइंस विद सोसाइटी, देन साइंस विद साइंस, देन सोसाइटी विद साइंस. बट क्वेश्चन इज, how can we integrate science and society, and especially culture, because culture is very integral part of our society. So from here I start my talk. When we talk of society, so Aristotle has very rightly said that man is a social animal. When we say man is a social animal, society is composed of human beings. Now, what is the objective of a human being is philosophically very different in the Indian perspective and Western perspective. हम भारतीय दृष्टि से हम ये मानते हैं कि मनुष्य जो है उसके 4 हिस्से होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा. और जो मनुष्य है उसका मूल उद्देश्य है, चाहे वो आप जैनिज्म को लें, बुद्धिज्म को लें, या भारत के जो हमारे षड दर्शन है उनको ले, या हमारी फिलोसॉफी के किसी भी स्वरूप, इवन चार्वाक दर्शन में भी उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति थी. यह है कि आप एंजॉय करें, उससे मोक्ष प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होती. तो एनी काइंड ऑफ फिलोसॉफी यू टेक, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो शरीर रूप में हमने जो जन्म लिया है उसको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मन और बुद्धि को हम किस तरह से लगाएं. तो व्हाट आर द बेसिक cultural basic foundation of culture in India? It is basically that depends on the 4 things, जो मन, शरीर, और इसके लिए हमने भारतीय संस्कृति के बेसिक फाउंडेशन में 3 चीजों को इंट्रोड्यूस किया: आयुर्वेद, योगा एंड मेडिटेशन. आयुर्वेद जो शरीर का ध्यान रखता है, योगा जो मन और बुद्धि का ध्यान रखता है, और मेडिटेशन ध्यान जो आत्मा का ख्याल रखता है. तो आज हम इस पर प्रश्न खड़ा करें कि क्या हम वाकई विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ने की दिशा में कोई काम हो रहा है क्या? क्या समाज के दृष्टिकोण से, और अगर समाज के दृष्टिकोण से कहें तो भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या विज्ञान कोई काम कर रहा है? ऐसी स्थिति में हमको ऐसा लगता है कि अभी भारतीय समाज और संस्कृति के साथ हमारे विज्ञान का कोई सीधा सीधा कनेक्ट नहीं है. अब सवाल उठता है कि ये कनेक्ट क्यों नहीं है, और हमको ये अगर सोशल एंड कल्चरल स्टडीज इन साइंस करना है तो इसको कैसे करना पड़ेगा. तो भारतीय समाज को समझना है तो भारतीय समाज के व्यक्ति से बना हुआ परिवार, कुटुंब और ये तमाम चीजों को समझना पड़ेगा, और हमें एक मानव जीवन के अंदर में जो संस्कार है उनको समझना पड़ेगा. जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में जो संस्कार निहित किए गए हैं, जिसमें 16 संस्कार प्रमुख रूप से आते हैं, क्या हमने कभी इनको विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश की? जनरली हम ऐसा करते हैं कि वो समय के साथ जैसे बदल रहा है, हम बहुत फास्ट होते जा रहे हैं. हम तो अब 16 संस्कार को भी नहीं मानते, हम तो अब मुश्किल 3-4 महत्वपूर्ण संस्कार कर देते हैं, वो भी मजबूरी है, और उसके बाद हमें लगता है कि मानव जीवन सफल हो गया. लेकिन हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें उनके वैज्ञानिक पहलू, उसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हमको समझ नहीं है. सवाल ये नहीं है, मुझे समझ नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि मैं विज्ञान और अध्यात्म और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों का अध्ययन समानांतर नहीं कर रहा हूँ. और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूँ, बहुत दृढ़ता से मानता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप है कि जो
सामाजिक अध्ययन का बहुत अच्छा अध्ययन कर रहा है, जिसकी भाषा की बहुत अच्छी समझ है, उसके पास विज्ञान की समझ नहीं है। उदाहरण के तौर पर कि मैं साइंस मैंने पढ़ी है, मान लें मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मैं दूसरे भी विज्ञान को पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे पास संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है कि मैं अपने इस वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स को संस्कृत से कनेक्ट करते हुए मैं अपने प्राचीन शास्त्र और प्राचीन विज्ञान से कनेक्ट कर सकूं। और जो लोग मानव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनके पास विज्ञान का कोई आधार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो SSR की बात हम जब करते हैं, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कनेक्टिंग लिंक है जिसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को किस तरह से जोड़ा जाए। मैं ऐसा मानता हूं, ज्ञान और विज्ञान ये दो महज शब्द नहीं है। ज्ञान से ही विज्ञान निकला है। ज्ञान का जो गूढ़ अध्ययन है वो विज्ञान है। हम सामान्य अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान जो होता है वो उसके अंदर का गूढ़ अध्ययन है, बहुत डीप स्टडी है। फिर उसमें आपको लगता है कि उसके लिए प्रयोग किए जाए, उसके लिए एक लेबोरेटरी प्रैक्टिस हो, और यही हमने आधार बनाया है विज्ञान का। और इसीलिए हम बहुत सारी चीजें जो लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, बट ऐसा है नहीं। एक उदाहरण देता हूँ आपको। हिग्स बोसॉन एक थ्योरी आई, ये थ्योरी आई SN बोस थे 1920s में, और उन्होंने एक थ्योरी दी कि दी होल यूनिवर्स it originated somewhere with a fundamental particle. We don't know what is the name of the particle, how it was created, but we know very well that there was a fundamental particle that created the entire universe. Bose was a disciple of Max Planck and Albert Einstein. ये थ्योरी एक्सेप्ट हो गई और उसको हमने बोसॉन नाम भी दे दिया, हिग्स बोसॉन थ्योरी हम कहते हैं। लेकिन हमने इसको कभी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, और जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हुआ 2010-11 सन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड वी रियलाइज कि जो SN बोस ने बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं साइंस में जो तत्काल लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक हाइपोथेसिस होती है। लगभग इसी तरह की बहुत सारी बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में हैं, लेकिन हमने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन साइंस के साथ कनेक्ट करके पढ़ना लगभग बंद कर दिया। हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनमें संभव है कि केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, क्या इन लोगों ने कभी डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, एक बहुत एमिनेंट केमिस्ट हुए हैं 19th and 20th सेंचुरी के, क्या इनकी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है द हिंदू केमिस्ट्री, 2 वॉल्यूम में ये बुक है द हिंदू केमिस्ट्री, क्या हमने कभी इस पुस्तक के बारे में पढ़ा है, कभी सुना है? क्या हमारे प्रोफेसर ने बताया है कि इस तरह की भी एक पुस्तक है द हिंदू केमिस्ट्री? द हिंदू केमिस्ट्री में भारत के प्राचीन से लेकर 19th सेंचुरी तक के जो भी बहुत अच्छे वर्क्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल साइंस हुआ है, उसको उन्होंने बहुत शानदार तरीके से वो पुस्तक बनाई है। सवाल यह है कि हम हिंदू केमिस्ट्री जब बोलते हैं तो उसमें शब्द जब हिंदू आ जाता है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनली कह सकते हैं कि वो हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में हमारे भारतीय प्राचीन काल से लेकर 19th सेंचुरी तक का जो केमिकल साइंस का डेवलपमेंट था, क्या हमें उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए? सवाल ये नहीं है कि भारतीय ज्ञान का ही अध्ययन क्यों करना चाहिए, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ। इस बात को कहने का एक आधार यह है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं साइंस में, तो हम यूरोपियन पद्धति की सोसाइटी पर बात नहीं कर सकते। हम अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर के हिसाब से बात करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के हिसाब से हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे देश में जो यहाँ की जलवायु, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की इकोलॉजी, पारिस्थिति के आधार पर जो हमारे पास विज्ञान उपलब्ध है, उसमें हमारे पास आयुर्वेद एक श्रेष्ठ विज्ञान है।
हमने कभी इस बात पे गौर किया है कि हम पैथोलॉजी के सामने में आयुर्वेद को हम पूरी तरह से खारिज कर देते हैं? लेकिन आप बताइए, पिछले 100 वर्षों में कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं, कितने ऐसे बॉटनिस्ट हैं, कितने ऐसे केमिस्ट हैं जिन्होंने भारतीय जो आयुर्वेद पद्धति है उस पर कोई ठोस रिसर्च किया होगा? हम उतना भी ठोस रिसर्च नहीं करते जितना जर्मनी के कुछ विश्वविद्यालयों में हो रहा है। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद पर, संस्कृत पर, वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर में जो जिस तरह का अध्ययन हो रहा है, हमने अपने ही समाज के दृष्टिकोण से अगर हमने अपने विषयों का अध्ययन नहीं किया तो ये मान के चलिए कि कभी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, विथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए आपको करना क्या है? करना ये होगा कि वी हैव टू गो थ्रू अवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज द लैंग्वेज। आज हमने वेस्टर्न साइंस को अडॉप्ट करके हमने पूरी तरह से साइंस को अंग्रेजी परस्त कर दिया है। आज कितने साइंस कॉलेजेस हैं जहां पर इंग्लिश मीडियम के बजाय हिंदी माध्यमों की पुस्तकें चलती है। मैं जब हिंदी ग्रंथ अकादमी में था तो हमने बहुत प्रयास किया। रेणु माहेश्वरी मैडम हमारे साथ बैठी हुई है, मैंने उनसे भी प्रयास किया था कि वो हिंदी में कोई अच्छी पुस्तक लिखे, हमारे बच्चों को हिंदी माध्यम में कितनी अच्छी पुस्तक अवेलेबल हो जाए। तो हमने क्या किया है, साइंस का हमने सरलीकरण करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, समाज में आवश्यकता के लिए विज्ञान का अनुसंधान तो होता था, लेकिन वो समाज का लोकप्रिय विषय नहीं था। हम जानते हैं सभी कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जंगलों में अपने डिसाइपल्स, they took disciples and they researched and developed many technologies। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, नहीं तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा कि किस किस तरह की मिसाइल की बात और किस किस तरह के जेनेटिक रिसर्च हमारे प्राचीन काल में हुए जिसको हम लोगों ने नकार दिया। और नकारने का एक बड़ा कारण ये है कि हमने कठिन विज्ञान का अध्ययन करने के बजाय विज्ञान को सरल करके अध्ययन करने की दिशा में आगे बढ़ गए। हम लोगों ने विज्ञान को सरल करना शुरू किया। एक प्रोफेसर ने कोई पुस्तक लिखी, वो समझ में नहीं आ रही है तो उसी को देखकर दूसरे ने उसका सरलीकरण कर दिया। वो शिक्षक को भी अच्छे से समझ में आ रहा है, स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो आपके सूत्र है और उस सूत्र से उसमें कुछ अगर नया मौलिक समथिंग इनोवेटिव यू क्रिएट, मुझे लगता है कि ये विज्ञान है, ये ज्ञान से अंतर है। हमने विज्ञान को भी ज्ञान का ही एक स्वरूप बना दिया है कि हम पहले समाज की जरूरत के हिसाब से अनुसंधान करते थे, लेकिन वो समाज का हिस्सा नहीं हुआ करता था और हमारे ऋषि मुनि उसको लिखकर नहीं जाते थे। वो कहीं पर उसके फॉर्मूला नहीं लिखे जाते थे, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये टेक्नोलॉजी, ये फॉर्मूला अगर गलत हाथों में लग गया। मैं आपको प्रभु राम की बहुत सारी बातें चल रही हैं, 22 तारीख को उनका एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। हम जानते हैं कि जब रावण जो है उनको नाश करने के लिए जब प्रभु राम का जन्म हुआ तो सारे ऋषि मुनि, जिसमें विश्वामित्र हो चाहे मुनि अगस्त हो, इन लोगों ने सबने अपने अपने अस्त्र उनको दान में दी। अब अस्त्र उनके पास थे तो वो किसी को भी दान में दे सकते थे। सवाल यह है कि वो अस्त्र प्रभु राम को ही क्यों दिए गए? क्योंकि उनको लगा कि ये सही व्यक्ति है जो इन हथियारों का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना रावण भी कोई कम ताकतवर नहीं था, वो सारे अस्त्र तो रावण के पास भी जा सकते थे। कहने का आशय है कि प्राचीन काल में जो हमारे रिसर्च होते थे, अनुसंधान होते तो वो भारतीय समाज और संस्कृति की दृष्टि से होते थे, लेकिन कभी भी उनको लोक विषय नहीं बनाया गया। वो पब्लिक सब्जेक्ट नहीं थे कि कोई भी एक फॉर्मूला और एक टेक्नोलॉजी कोई पेटेंट करा ले और वो उसको मास प्रोडक्शन शुरू कर दे। ऐसा नहीं हुआ। अभी हो गया है उल्टा। अब विज्ञान एक लोकप्रिय विषय है। 100 में से 70 जो स्टूडेंट है वो विज्ञान लेना चाहता है, 80 भी लेना चाहता होगा। बट समाज की दृष्टि से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षण और अनुसंधान होने चाहिए, वो प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है। तो अगर हमको सोसाइटी से समाज साइंस को जोड़ना है, want to club the society, we want to integrate society with science, then we have to be very clear कि साइंस नॉलेज नहीं है, नॉलेज के आगे है। और ये नॉलेज के आगे हम चीजों का सरलीकरण करके विज्ञान को पढ़ेंगे तो हम कभी
उससे नई चीज इनोवेट नहीं कर सकते। और हो क्या रहा है, अभी जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? मैं कई बार इस बात को मजाक में कहता हूँ, इसको आप सीरियसली नहीं लीजिएगा। विज्ञान, खासकर वेस्टर्न जो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो 15th-16th सेंचुरी से शुरुआत हुई, उसके बाद से लेके अब तक विज्ञान ने किया क्या है? पहला, उन्होंने जो मानव श्रम है उसको बताया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम तो एक दिन में 10 ही बना सकते हो, मैं तो 200 बना सकता हूँ। उन्होंने मानव श्रम को कमजोर कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया? दूसरा उन्होंने जो मानव है उसको अधिकाधिक आलस्य की तरफ ले गया। हर चीज ऑटोमेटिक होता गया। ये हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो 5 स्टेजेस पढ़ते हैं उसमें कोल बेस्ड जो है, उसके बाद फिर ऑटोमेशन, अभी तो 5.0 की बात चल रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो हमने सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हर चरण में क्या किया? इंसान को हमने आलसी बना दिया। हम टीवी तक जाके बटन भी नहीं दबाना चाहते, हम चाहते हैं कि रिमोट से वो सारा काम हो जाए। दूसरा काम, विज्ञान ने मनुष्य को आलसी बनाया है, उसको उसके श्रम को उसने एक तरह से कम करने, और इसलिए बहुत सारे रोग भी उससे पैदा हो रहे हैं। और तीसरा क्या किया है? उसने अमीरी और गरीबी के बीच में खाई पैदा कर दी है। आज विज्ञान और तकनीक किसके लिए काम कर रहा है? सोसाइटी में किस वर्ग के लिए काम कर रहा है? अगर हम बड़े व्यापक तौर पर देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट्स के हाथ में है। आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करवा रहा है? वो मल्टी बिलियनर कंपनीज करवा रहे हैं, यूएसए में हो चाहे यूरोप के बड़े बड़े देशों में हो, वो करवा रहे हैं। और उसको करवाने के बाद वो पेटेंट करते हैं। भले वो समाज के लिए बहुत उपयोगी दवाई पैदा करते होंगे, उपयोगी मशीन बनाते होंगे, उपयोगी कोई टेक्नोलॉजी लाते होंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का उद्देश्य उस विज्ञान का समाज के लिए कुछ अच्छा, समाज की बेहतरी, समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का नहीं है। वो एक कॉर्पोरेट पे R&D पे जितना खर्च हुआ है उससे अधिकाधिक मुनाफा कमाना, टू अर्न ग्रेट एंड ग्रेट प्रॉफिट, ये अगर हमारे R&D का ऑब्जेक्टिव हो गया है तो मुझे लगता है कि साइंस और सोसाइटी को कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो ये मेंटेलिटी है। इसलिए मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपसे बात कही थी। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो साइंस है, साइंस को सोसाइटी के अनुकूल बनाने के लिए आपको उसके अंदर के बिजनेस को खत्म करना पड़ेगा। और हमको इसके साथ साथ हमको अपने देश के अनुसार क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारे सोसाइटी और कल्चर में ऐसे बहुत सारे पर्व आते हैं, तीज त्योहार आते हैं, उसमें हम सबको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो साइंस हमको देता है। लेकिन जो आज का साइंस है वो हमारे परंपरा और तमाम चीजों को डिस्कार्ड करता है। तो हम क्या अपने देश के हिसाब से, हाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि इससे कनेक्ट था, वो मैं बात भूल गया था। तो विज्ञान की दृष्टि जो है भारत की वो इस तरह की है, ये विषय मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। हमारे देश में, भारत में जो विज्ञान की दृष्टि है, ये हमारी ज्योग्राफी अलग है, हमारी इकोलॉजी अलग है। विज्ञान ने जो किया, वेस्टर्न विज्ञान ने, वो अपनी जगह है। हमारे यहाँ पे दादी और नानी के नुस्खे चलते हैं। हमने देखा होगा कि बचपन में किसी का पेट दर्द हो तो हम नाभि में हींग और घी मिलाकर लगा देते हैं। किसी को सर्दी खांसी हो रही है तो हम घी और काली मिर्च को पीसकर हम शहद के साथ उसको चटा देते हैं। ये क्या है? ये क्या मेडिकल साइंस नहीं है? और ये एक्सेप्टेड मेडिकल साइंस है, डॉक्टर भी इसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। ये मेडिकल साइंस कहाँ से आया? ये आयुर्वेद है हमारा। ये आयुर्वेद भारत में ही क्यों आया, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। ये आयुर्वेद यूरोप में क्यों नहीं आया? क्योंकि यूरोप की ज्योग्राफी, वहाँ की इकोलॉजिकल सिस्टम, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना, वो आयुर्वेद को सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि वहाँ पर इतने ज्यादा फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी नहीं है। वहाँ पर आयुर्वेद के लिए जरूरी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, जो हर्ब्स हैं, जो शर्ब्स हैं, वो वहाँ पैदा ही नहीं होते। लेकिन भारत में तो होते हैं। भारत में जो होते हैं उसको लेकर चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने जो कार्य किया, जो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी तक काम किया, अब हमको ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब हम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे सरल और सस्ता इलाज क्या हो सकता है?
अगर हम आज जो मैं इसके पहले जो बात कर रहा था कि चीजों को हमने लोगों के लिए सुलभ कहाँ किया, मुझे याद आता है कि आज से 30 साल पहले हम जब बहुत छोटे थे, पेट में दर्द होता था तो कंकाली पारा में एक सरकारी अस्पताल था। उस समय प्राइवेट डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हुआ करते थे और स्पेशलिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। तो वहां पर हम जाते थे और डॉक्टर को बोलते थे, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। तो हमको एक तो ऐसी गोली, खासकर वो हवाबान हड्डी हुआ करती थी, वो हमको दे देता था और हम ठीक हो जाते थे। आज आप एक डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो पहले तो 10,000 रुपए के आपके डायग्नोस और टेस्ट करवा लेगा, उसके बाद देगा तो वो भी वही दवाई जो उसने बिना पैसे के दिए थे। तो एक गरीब आदमी, समाज का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति तक हमने ये स्वास्थ्य की सुविधा कहाँ दी? ये स्वास्थ्य में प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा देने का अधिकार ये किसने दिया था? ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली में है, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना किसी का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। वन क्षेत्र में, जंगलों में जो भी फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, कितने सारे वैद्य हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में पूरे देश में वैद्य हैं जो बहुत अच्छे ढंग से, मैं दावे से कह सकता हूँ, आज इस लेक्चर को जितने लोग सुन रहे होंगे उन लोगों ने कभी किसी के घर में कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया हो जिसको एलोपैथी भी ठीक नहीं कर पा रहा हो या उसमें समस्या आ रही हो, हम लोग वैद्य के पास जाते हैं। हम खासकर हड्डी को जोड़ने के लिए हमने कितने सारे वैद्यों के बारे में सुना है कि वो ऐसा लेप करता है तो वो हड्डी जुड़ जाती है। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। हमने एक क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं श्रीलंका के, सनत जयसूर्या, हमने इनके बारे में सुना होगा। इनको एक बहुत घातक बीमारी हो गई, ये चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। इन्होंने, पैसे की कमी नहीं थी, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत महान खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में इसका इलाज करवाया लेकिन वो ठीक ही नहीं हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ बालाघाट क्षेत्र में एक वैद्य है जो जड़ी बूटी से इस तरह की समस्याओं का निदान करते हैं। सनत जयसूर्या 1 महीने उनके यहाँ रहे और आप यकीन नहीं करेंगे उनकी सारी समस्या वहां से दूर हो गई। मेरा सवाल यह है कि अगर आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, अगर जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है, तो हम आयुर्वेद को समाज के साथ जोड़ने के लिए उस पर आगे के अनुसंधानों को बंद क्यों कर दिया? आज हमको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तब हम ये जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं और ये जो सेमिनार कर रहे हैं, मुझे लगता है तभी सार्थक होगा। ये कब जुड़ेगा? जब हमें अपने विज्ञान पर भरोसा होगा। और हमारा विज्ञान क्या है? हमारा विज्ञान ज्ञान पर आधारित है। पूरा नॉलेज सिस्टम जो है हमारा विज्ञान है। तो हमारे नॉलेज सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपको सूत्रों को देखना पड़ेगा। उस सूत्र में कितनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर मैं चर्चा करना शुरू करूं, तो जैसे एक तो उदाहरण ही आपको देता हूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण या ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद वैदिक साहित्य है, हम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। इस ऐत्रेय उपनिषद में एक बालक के भ्रूण के जन्म से लेकर उसके नवजात गर्भ से बाहर आने तक कैसे कैसे उसके अंग डेवलप होते हैं, इसका डिटेल्ड वर्णन है। उस समय तो हाईटेक एपरेटस नहीं हुआ करते थे, उस समय तो बहुत सारे लेबोरेटरीज नहीं हुआ करते, होती रही होंगी, उसको लिखा नहीं गया। लिखा क्यों नहीं गया? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो लोक विज्ञान नहीं था। लोक विज्ञान इसलिए नहीं था क्योंकि हम मानते थे कि ये जिसके पास जाएगा वो उसका गलत उपयोग कर सकता है। और हमने अपने पुराणों में देखा भी है, पुराणों में नहीं, आज वर्तमान में भी देखते हैं कि जितने भी आज अपराध हो रहे हैं, जितने भी समाज विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उसमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा उनकी मददगार है। आज पूरी दुनिया में अगर हिरोशिमा और नागासाकी को जिसने ध्वस्त कर दिया, वो एटम बम जो है वही इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। ये किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है साइंस की? मेरा कहने का आशय यह है कि हमारे यहाँ पर जो विज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है, वो हम किस तरह से अपने प्राचीन साहित्यों के सूत्रों से ले, और अभी तक बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनका समाधान नहीं हो सका है। मैंने अभी आपको ऐत्रेय ब्राह्मण की बात कही। अगर मैं आपको कहूं कि जो महाभारत है, मैडम आप सब साइंस वाली हैं, हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, पार्थेनोजेनेसिस।
ये पार्थिनोजेनेसिस किस विषय का शब्द है? ये जेनेटिक साइंस का शब्द है, मेडिकल साइंस का शब्द है। A female can produce offsprings without conjunction with male. Science calls this procedure as parthenogenesis. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमारे महाभारत में पार्थ कौन थे? पार्थ थे अर्जुन। और अर्जुन का जन्म कैसे हुआ था? कुंती ने किस तरह से अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम को जन्म दिया था? यही पार्थोजेनेसिस है। ये संयोग ही हो सकता है महज कि पार्थोजेनेसिस नाम पड़ गया, लेकिन ऐसे ऐसे हम अपने प्राचीन शास्त्रों से हम किन किन चीजों को वहां से निकालें, हम किस किस तरह से उसका अध्ययन करें, और हम अपने छात्रों को किस किस तरह से सरलीकृत विज्ञान की जगह सूत्र आधारित विज्ञान की तरफ जाएं, और वो सूत्र आधारित विज्ञान समाज और संस्कृति को लेकर चलने वाला हो, तब साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा पूरी होगी। अब इसके लिए छात्रों को सरल नहीं करना है, छात्रों के लिए कठिन करना है। कैसे करना है? अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सामान्य बात में, चूंकि मैं विज्ञान का कोई बहुत प्रकट विद्वान नहीं, मैं एक सामान्य अध्येता हूँ, एक रीडर हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ समझता हूँ अपने हिसाब से। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल, हमने अपने समाज में आर्ट्स लेकर पढ़ने वाले लोगों के प्रति क्या धारणा बना रखी है, और साइंस लेकर पढ़ने वाले लोगों के बीच में क्या धारणा बना है। हम मान के चलते हैं साइंस लेकर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत होशियार हैं, और आर्ट्स लेकर पढ़ने वाले लोग होशियार नहीं है, एक्सेप्शनल दोनों जगह होते हैं। अगर हमको सोशल एंड कल्चरल स्टडीज इन साइंस को बढ़ावा देना है, तो हमें सोशल साइंस और ये जो दूसरा हमारा जो कोर साइंस है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के साथ साथ हमको लिंग्विस्टिक, क्योंकि जब हम सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं तो सोसाइटी और कल्चर का जो पहला एस्पेक्ट आता है, दैट इज लैंग्वेज। हमको, और ये बात बहुत अच्छी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट भी साइंस ले सकता है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स लेता है, कोई भी कंपनी कंपोजिशन बना सकता है, वो किसी तरह का एक 2-3 सब्जेक्ट को मिलाकर स्टडी कर सकता है। तो हमको सोशल साइंस को हे की दृष्टि से अगर हम देखेंगे और विज्ञान को कठिन की दृष्टि से देखेंगे, भले ही वो विज्ञान कठिन ना हो। आज साइंस कॉलेज में भी, चाहे वो पीजी हो और यूजी हो, जिस तरह से 80%, 85% रिजल्ट आते हैं, मुझे लगता है कि वो भी कोई बहुत कठिन नहीं है। कठिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसका हम लोगों ने सरलीकरण कर दिया है। ये सरलीकरण करने की, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी साइंस पढ़ा है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स की बेस्ट बुक मुझे लगती है, अगर वास्तव में देखा जाए तो रजनी खलीडे की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं 11th-12th में जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैं रजनी खलीडे की बुक लेकर आया। आप यकीन नहीं करेंगे, हम अपने 11th-12th में जो बुक्स पढ़ते थे उसमें जितनी आसानी से साइंस हमको समझ में आता था, रजनी खलीडे एक पेज भी हमको समझ में नहीं आता था। हमको रजनी खलीडे जैसी पुस्तकों से अपने स्टूडेंट्स का अध्ययन करवाना पड़ेगा। लेकिन रजनी खलीडे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ हमारे प्राचीन शास्त्रों से। हमने वैदिक साहित्यों को नहीं पढ़ा है। मेरा बहुत आग्रह है, ऐसा ईश्वर ने समय दिया मुझे। जब ये कोविड काल चल रहा था तो मैंने वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया, खासकर ऋग्वेद का अध्ययन किया। ऋग्वेद को मैंने संपूर्णता में उसका अध्ययन किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति जब ऋग्वेद पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं इसको इंजीनियरिंग करते करते क्यों नहीं पढ़ा। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी चीज को मिस कर गया। क्या नहीं है उसमें मैकेनिक्स है, उसमें हीट है, उसमें मैग्नेटिज्म है, उसमें एस्ट्रोनॉमी है, उसमें एस्ट्रोलॉजी है, एक एक चीज, सारे नक्षत्रों के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। उसमें बायोलॉजी के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आज हमको समझ में आता है। अभी मैंने आपको ऐसे ही जो
उपनिषद की जो बात कही, ऐत्रेय उपनिषद भी ऋग्वेद से जुड़ा हुआ एक उपनिषद है। और इस ऐत्रेय उपनिषद में भी जो गर्भ से लेके जन्म तक जो अंगों का विकास होता है, वो किस किस सप्ताह में कैसे कैसे विकास होता है, उसका पहला जो एक सूत्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अश्विन ब्रदर्स की बात आती है, जो मेडिकल ऑफिसर्स थे। हर तरह के देवताओं की चर्चा है, उसमें मेडिकल ऑफिसर्स थे, उसमें इसी तरह से अग्नि, फायर, हीट, एनर्जी, हर चीज की बात है। वर्षा कैसे होती है, कंडेंसेशन, इवोपरेशन एंड जो 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 प्रेसिपिटेशन है, इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको ऋग्वेद में मिलता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमें समाज और संस्कृति को विज्ञान से जोड़ना है, if really we want to integrate or we want to incorporate social and cultural studies in science, then we have to go back to Vedas, as Swami Dayanand has said. स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को समाज और अध्यात्म की दृष्टि से कहा था, वह भी स्व की दृष्टि से कहा था। हमारी इतनी महान सभ्यता, हमारा समाज, इतनी महान संस्कृति, वो किस तरह से हमारी गुलामी के काल में दबती चली गई, और इसलिए उन्होंने कहा था कि गो बैक टू वेदास एंड रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। और वहां से हम स्वराज और जो स्वदेशी की बात हम सुनते हैं, और वो प्रेसिपिटेट करता है भारत के अंदर के फ्रीडम स्ट्रगल को। ये वही काल है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, भारत के अंदर में एक पॉलिटिकल एक स्ट्रगल शुरू हुआ था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगर समाज संस्कृति के लिए अगर इस बात को कहा था, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन साइंस वी हैव टू गो बैक टू वेदास, वी हैव टू लर्न द वैदिक साहित्य। और ये साहित्य सूत्रों में है, सरली नहीं है। हमको सरल पढ़ने की आदत हो गई है, ये सरल तरीके से काम नहीं आएगा, इसमें सूत्र है। अगर हमने उस सूत्र को धीरे धीरे आगे बढ़कर उसको हमने अगर रिसर्च करना शुरू किया और समाज में चीजों को देखना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि स्टिल वी हैव hundreds and thousands of formulas which still has not been proved in the laboratory. अगर हम वो करते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की बात, कौरव की बात होती है कि गांधारी अपने बच्चों का। अब मजे की बात क्या है कि हम अपने ही देश में अपने ही ज्ञान और विज्ञान का मजाक बनाते हैं। हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया था कि गांधारी के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ। हम लोगों ने अपने आप को बड़ा बौद्धिक समझा, हमने कहा कि वो तो पुरातन बात करते हो, तो ढोंगी बात है, वो पुरातन है, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं हो सकता। आप सोचिए कि वो केवल थ्योरी नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट भी था कि गांधारी से बच्चे नहीं हो रहे थे, 2 साल तक वो बच्चे नहीं दे पा रही थी, वो भ्रूण बनता था, उसके बाद वो एबॉर्शन हो जाता था। उस समय महर्षि वेद व्यास के पास वो टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो भ्रूण आपका जो खराब हो गया है, हम इससे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। और 100, हमने सबने ये कहानी शायद सुनी हो कि उन्होंने 100 पुत्र पैदा किए। एक माँ 100 पुत्र पैदा करे, ये संभव नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के कारण नहीं हुआ है। ये बाद में साबित भी हुआ। और साबित होने के बाद भी अगर हम अपने विज्ञान और अपने ज्ञान पर हंसी उड़ाएं और हम सोचे कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का विज्ञान है यही बेस्ट है, तो ये बेस्ट विज्ञान ने तो इस दुनिया का कोई भला नहीं किया। आज इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट के सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, इसका जनक कौन है? भारत में हम 9th, 10th, 11th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में हम इकोनॉमी के सिरमौर हुआ करते थे। पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, वो पूरी दुनिया में भारत सप्लाई करता था, चाहे वो कपास के बने हुए कपड़े हों, चाहे हाथीदार। तो ये जो सारे मास प्रोडक्शन होते थे, ये मास प्रोडक्शन से तो कभी कोई इकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है कि जो साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ध्वस्त हो गई है, वो खारिज हो गई है। करना क्या है? वापस हमें जुड़ना है। और ये मानकर चलिए, ये काम हम अपने देश के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा देश तो मानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा देश मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हमारा देश ये नहीं कह सकता कि हम जो विज्ञान बनाएंगे, हम जो तकनीक बनाएंगे, वो केवल हमारे देश के लिए है। हम पूरी दुनिया के अंदर में जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसके लिए समाधान अगर कहीं से मिलता है। मुझे याद आता है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन था।
उसमें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां भाषण देने गई और उस भाषण में उन्होंने वैदिक पर्यावरण के कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने वहां पर रखा और उस सम्मेलन में उनके भाषण के बाद उसकी इतनी प्रशंसा हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबको कहा कि ये मेरे विचार नहीं है, हमारे प्राचीन वैदिक साहित्यों में जो विचार है मैं केवल उनका ही मैंने प्रकटीकरण किया है। मेरा कहने का आशय है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान की कोई कमी नहीं है। हम संस्कृत से भटक गए हैं। आज हम संस्कृत पढ़कर भी अगर वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहेंगे तो मैंने अपनी कठिनाई में आपको स्वयं बता रहा हूँ। जब मैंने ऋग्वेद पढ़ना शुरू किया तो संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे, लेकिन ऋग्वेद के एक भी सूक्त मुझे समझ में नहीं आते थे। तो मैंने बड़ा लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो वैदिक संस्कृत है वो बहुत क्लिष्ट और बहुत क्लासिकल है, आप उसको नहीं समझ सकते। लेकिन जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे और जब तक अपनी भाषा में लोगों को नहीं समझाएंगे, ज्ञान विज्ञान समाज के साथ जुड़ेगा नहीं, संस्कृति के साथ जुड़ेगा नहीं। हम अपनी संस्कृति के तीज त्योहार पर्व परंपराओं को, संस्कारों को, हम तिलक लगाते हैं, हम चूड़ियां पहनते हैं, हम सिंदूर लगाते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम शंख बजाते हैं, हम घंटी बजाते हैं। आप इस आधार पर इसको खारिज नहीं कर सकते कि ये सब के सब तकियानुसी चीजें हैं। सबके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है। हमसे ज्यादा तो जर्मनी कर रहा है। मेरे पास एक बुक अभी हाथ लगी है जिसमें साइंटिफिक बेसिस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। उसमें आपको हर एक चीज की इतना साइंटिफिक उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेरे पास समय नहीं है उस पर बहुत ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, लेकिन दुनिया इस पे रिसर्च कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें अब हमारी बारी है, देर से ही सही। जैसे दुनिया ने जब योग को योगा बनाकर एक्सेप्ट कर लिया, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों में बड़े बड़े योग के गुरु आ गए। जब यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बना दिया, तब हमें लगा कि नहीं, योग तो हमारा है और हम लोगों ने भी उसको एडॉप्ट कर लिया। तो ऐसा अगर एनरूट होकर भी विदेशों से होकर अगर हमारे पास आता है तो भी मेरा आग्रह यही है कि अगर हमको साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से सोशल एंड कल्चरल स्टडीज इन साइंस को जोड़ना है तो हमें अपने प्राचीन अपने शास्त्रीय ग्रंथों की ओर जाना पड़ेगा। हमें अपने पुराने ग्रंथों को समझना पड़ेगा। विज्ञान के सरलीकरण से दूर जाना पड़ेगा। विज्ञान सरल नहीं हो सकता। ज्ञान के रूप में अगर आप विज्ञान में बीएससी और एमएससी और पीएचडी भी कर लेंगे तो समाज की दृष्टि से आपकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता तब है जब विज्ञान के मर्म को समझकर समाज के साथ जुड़े और समाज की समस्याओं को दूर करें। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि जो हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं, जो साइंस और सोसाइटी और कल्चर की बात कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारी सरकार ने एक बार फिर से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि यूनेस्को भी यही बात कह रहा है। यूनेस्को लगातार साइंस एंड सोसाइटी, कल्चर एंड साइंस को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को कैसे मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ें, इसकी भी चर्चा यूनेस्को कर रहा है। तो आज समय है, दुनिया वापस इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर रही है। इसमें हमको भी मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। इसमें बस इतना ही कहूँगा कि हमें समाज के विषय, संस्कृति के विषय और विज्ञान के विषय, इसको अलग अलग न देखें। कई बार हम विज्ञान को इतने कठोर होकर मानने लगते हैं कि जो विज्ञान में लिखा है यही सही है। तो कई बार मुझे लगता है कि विज्ञान को मानने वाले भी कई बार विज्ञान के लिए अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो अंधविश्वास किसी भी चीज का हो, हम परीक्षण करें समाज की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, और हम इसको जितनी जल्दी हो एडॉप्ट करें, दुनिया के लिए कोई रास्ता दिखाएं। मुझे लगता है कि 40 मिनट लगभग मेरे पूरे हो गए हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत खूब समझाया सर कि हमारी संस्कृति, समाज और विज्ञान ये एक दूसरे से पृथक नहीं है। दे आर ऑल एंटेंगल्ड विद ईच अदर। जब इन तीनों में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा तभी सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट संभव है। Scientific developments need to be integrated to the society as a whole, and also scientific growth doesn't mean that we neglect our cultural values.
Any nation can grow only when it relies on the strong foundation of its culture. I thank you again, sir, for taking out your precious time and sharing your knowledge with us. If anyone needs to share or ask anything, you are most welcome for that. शशांक, मुझे एक मतलब आपका बहुत ही, एक तो थैंक यू कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने साइंस और समाज के बारे में कहा। लेकिन मेरे को जो थोड़ा सा एक लगा कि आप शायद इस पर और अच्छे से मेरी जिज्ञासा दूर करेंगे। आपने कारपोरेट की भी बात की, आपने साइंस की भी बात की, और मैंने ये मतलब जितना समझ आता है कि कारपोरेट जिस तरीके से पूरी दुनिया को चलाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज की आपने बात की, जो कि अब मैं उस तरह मतलब एक राजनीतिक तौर पे तो मैं नहीं उसको बता पा रही हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कारपोरेट कंपनीज जो कि पूरी दुनिया पर राज करती हैं, ऐसे में साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ग्लोबलाइजेशन स्तर पर, इंडियन का तो आपने कहा, किस तरीके से देखेंगे या किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समाज तक, मतलब साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विज्ञान को समाज तक बहुत पुराने जो आप ग्रंथ की बात कर रहे हैं उस तक पहुंचा पाए? जी देखिए, ये तो ऐसा है कि आज जो विज्ञान की स्थिति है पूरी दुनिया में, या विज्ञान की जो समस्याएं हैं, विज्ञान से पैदा हुई जो समस्याएं हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट पे हो, कल्चरल एस्पेक्ट पे हो, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हो, ये जो अमीरी और गरीबी की जो खाई बन रही है, ये तमाम चीजों पे आप ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्याएं केवल भारत में है, ये यूरोप में भी कोई कम नहीं है। आज यूरोप की सही जो जानकारी है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत सारी चीजें सेंसर्ड है, अमेरिका की बहुत सारी चीजें नहीं आ रही है। यूरोप की हालत इस यूक्रेन एंड रशियन वॉर के बाद में इतनी खराब हो चुकी है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के इतनी बड़ी क्राइसिस है, वहाँ इन्फ्लेशन इतनी बड़ी समस्या है, और बाकी तमाम सभी चीजें वहाँ पे समस्या है। तो ये जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह का समाधान अपनी सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से होगा। हम एक तरह की सोसाइटी, एक तरह की जो 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 सॉल्यूशंस हैं वो सभी सोसाइटी और कल्चर में नहीं हो सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था क्योंकि जब आपने मुझे कांटेक्ट किया सोशल साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं इसको गूगल में सर्च किया तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक गाइडलाइन मेरे हाथ लगा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया है। तो मैंने उसके ऑब्जेक्टिव को समझा, तो मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है समाज की समस्याओं को साइंस कैसे दूर करे, तो वो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में है। ऐसे ही यूरोप के भी हर देश की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है। मुझे लगता है हर एक को अपने हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होता है कि अभी आपने जो ही कि कॉर्पोरेट एंड साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना जो मुस्कुरा रही ये सुरीली आवाज कहाँ से आई? सॉरी, पर शायद I think Kavita Das madam mute Control. everyone and then Shashank will unmute. हाँ हाँ, नहीं मैंने अनम्यूट कर लिया, एनीवे कोई दिक्कत नहीं। विषय एक्चुअल में होता ये है कि हम लोग हर चीज के लिए ना बड़ा फंड, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं, और जब बड़ा बड़ा फंड है, जो हमारे जो वोकल फॉर, हाँ, शशांक सर की आवाज नहीं आ रही है। कविता आ रही आप नेटवर्क थोड़ा सा देखिए, आ रही है सर की आवाज। सर इट इज क्लियर, प्लीज सर कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। क्या कह रहा था? Really sorry for disruption. कोई Flow of रिपीट thoughts करेगा? थोड़े इंटरप्ट होते हैं। क्या क्या कह रहा था, मैं भूल गया। About यूरोप और उनकी जो समस्याएं हैं, और हाँ, ये हाँ, समस्याएं खाली भारत हाँ, में नहीं। ये मुझे तो डर ये है कि हम साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फंड के लिए हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह न चले जाएं।
हाँ तो जब जब हम वहां जाएंगे तो वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। मुझे लगता है कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्वदेशी टेक्नोलॉजी, गांव का जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, गांव का किसान भले उसने साइंस का एक भी अक्षर ना पढ़ा हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो माइंड सेट उसका है, हमको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा। आज साइंस जो लेबोरेटरी की पढ़ाई हो गई है, हमको इसको फील्ड स्टडी बनानी पड़ेगी। अपने आसपास के गांव की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को देखना पड़ेगा, उसको अपने साइंस की स्टडी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और उसके बाद उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोसाइटी के आदमियों को दे सकते हैं, तब हम छोटे छोटे स्टेप्स अगर करेंगे तब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से बच पाएंगे। मैं सुनीता पात्रा, मैं बॉटनी में हूँ यहाँ पे प्रोफेसर कॉलेज में। मैं आपकी बात सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे जो वेद हैं वो संस्कृत में हैं, और संस्कृत कहीं ना कहीं हमारे पास स्कूल में हाई स्कूल तक आते आते खत्म हो जाती है अगर स्टूडेंट संस्कृत नहीं लेते हैं। सो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ संस्कृत, ये वेद पढ़ने में और समझने में मेरे ख्याल से मुश्किल होती है। आप हिंदी ग्रंथ अकादमी से रिलेटेड भी हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि संस्कृत हमारे कॉलेजेस में भी, जैसे हिंदी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो हम संस्कृत को भी रखें, जिससे संस्कृत का नॉलेज हो तो वेद में जाके वो उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। ट्रांसलेशन इज अ डिफरेंट थिंग, और ओरिजिनली अगर आपको जाके पढ़ना है वेद में तो इस तरह से। मैडम, होता यह है कि हम लोग स्टूडेंट के ऊपर बहुत लोड डाल देते हैं। हम देखते हैं कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो होते, क्या करें, चलो बच्चों के सिलेबस में डाल दें। एनवायरमेंट बड़ा इशू है, क्या करें, चलो बच्चों के सिलेबस में डाल दें। ये हो रहा है तो चलो बच्चों के सिलेबस, हम क्या करते हैं कि सिलेबस बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है कि संस्कृत एकेडमिक्स रूप में पढ़ने के बजाय, संस्कृत इज सच एन इजी लैंग्वेज। अगर आप उसको कुछ बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं, कुछ ई क्लासेस होती हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर में बहुत अच्छी मास्टरी संस्कृत की हो सकती है। तो हम इग्नोस जैसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी बात सही है, हम फंडामेंटल संस्कृत, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे पास आ ही गया है कि हम साइंस विद संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम उसको एंकरेज करें, खासकर हमारे जो कोर साइंस हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के साथ संस्कृत को अगर हमने जोड़ा, और बहुत सारी बुक्स हैं, कभी आप मुझे बुलाएंगी तो मैं आपको कम से कम 25-30 ऐसे बुक्स बता सकता हूँ जो एंशिएंट साइंस सिस्टम्स के ऊपर में वेरी रिनोन्ड साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है। तो ऐसे बुक्स को भी हमको अपनी लाइब्रेरी में रखनी चाहिए। बच्चों को बोलना चाहिए कि जाके देखो तो सही उसमें क्या है। जैसे मैंने आपको हिंदू केमिस्ट्री की बात कही, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय की, मैडम आप अपनी लाइब्रेरी में इसको मंगवाइए। ना हो तो ऑनलाइन archives.org में आप द हिंदू केमिस्ट्री बाई डॉक्टर पीसी रॉय करेंगे तो उसके दोनों वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट आई मीन टू से कि हर चीज को एकेडमिकली नहीं, इंटरेस्ट के आधार पे भी अगर हम करें तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमको अननेसेसरी बर्डन नहीं देना है स्टूडेंट्स को। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट या कुछ स्टूडेंट्स को ना दे, स्वस्फूर्त होके जाके संस्कृत पढ़ना, वो बहुत ही रेयर है। होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, आई डोंट डिनाई दैट, बट द केस इज वेरी रेयर। तो अगर मैडम हम एज ऑप्शनल अगर हम डालें तो दे may गेट एन चांस फॉर। मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने शुरू में कहा कि हमने विज्ञान को लोक विषय बना डाला है। ये लोक विषय नहीं हो सकता। आप इसको पब्लिक पे सोचेंगे कि हर कोई उसी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च करेगा, उसी तरह से स्टडी करेगा, ऐसा नहीं। अगर आपके कॉलेज में 20 ऐसे स्टूडेंट निकल आते हैं जो हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा को मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो, मुझे लगता है ये 20 लोग ही एक बड़ी क्रांति पैदा कर देंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन सर, आपके थॉट प्रोवोकिंग टॉक के लिए। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि साइंस को ऐसे एलिमिनेट करके सोसाइटी से नहीं रख सकते हम, और वो ऐसा भी नहीं है कि हम अपने वैल्यूज को डिनाई करें तभी हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के कहलाएंगे। लाइक हमारे वेदों में और हमारा जो एंशिएंट नॉलेज और विजडम है, उसको डिनाई करके हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि हम साइंटिफिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ चले, और उसको भी अगर हम उसके साइंटिफिक वैल्यूज को और बेसिस को ढूंढने जाएं तो विल डेफिनेटली फाइंड इट। Thank you once again, sir, for your precious time and sharing your wisdom with us.
Now I hand over we have reached the valedictory session. So I hand over this baton to Dr. Kavita Das, ma'am. Thank you, Dipali. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I think sir joined us, Anil Kumar sir joined us. So we start the session. सर Can ज्वाइन we कर start चुके the हैं. session? Yeah, Yes. sure. Sir ज्वाइन कर चुके. Okay. Both of us speakers are there. Anil Kumar and Buratis. Okay, now we are starting our valedictory session. A warm welcome to all of you to this valedictory session of webinar, Scientific Social Responsibility. We have reached the end of 2 days national webinar on Science Social Responsibility, SSR, with various issues raised and discussed during these 2 days. Scientific social responsibility, I think it is about the developing linkage between the science and society. The primarily involves bridging science, society, filling society-science gap, thereby bridging trust, partnership, and responsibility of science toward achieving social goals. The aim of this webinar is to make the younger population, our student, more aware and contribute to society's productivity and the wholesome development of our society. These 2 days have brought together intelligent minds with torrents of information, ideas, and have shared wealth of experience and knowledge. Like Dr. Bisen, our keynote speaker, said about the probiotics, the importance of bacteria, Dr. Rag giving emphasis on friendship and the sense of gratitude towards your teachers, and said that research and education has enormous power to change our world. And Dr. Dinesh, उन्होंने हमें बताया कि सामाजिक कुरीतियां कौन कौन सी है और साइंस के माध्यम से हम इन सामाजिक कुरीतियों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं. And then Dr. Sunita Patra told about the sickle cell कुंडली. ये शादी के पहले जो है बेटर है कि मेडिकल कुंडली, सिकल सेल कुंडली बनाई जाए एंड देन अवेयरनेस जो है फैलाया जाए गांव तक में कि इस बीमारी से किस तरीके से बचा जा सके. एंड टुडे आवर फर्स्ट स्पीकर इज साधना शर्मा मैम, और उन्होंने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया. उसी तरीके से डॉक्टर वर्णिका मैम ने, जिन्होंने जो है बहुत अंदर सुदूर गांवों तक जो है माओवादियों के बीच में काम किया, उन्होंने बताया कि हाउ टू कोरिलेट द साइंस विद दिस आवर सोसाइटी. एंड देन शशांक शर्मा हमारे प्राचीन ग्रंथों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इन साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से वर्णन है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है. So in this way, over the last 2 days, we have had deep insights into several issues of scientific, social, and responsibility. But before I request our eminent speaker of valedictory function to speak, may I request Dr. Sunita Patra to introduce our guest speaker, Dr. Anil Paris, JP University, Chhapra, Bihar. Over to Sunita Patra, ma'am. Thank you, ma'am. In this valedictory section, we have 2 speakers. First speaker is Dr. Anil Kumar. Dr. Anil Kumar, he is professor in Jivaji University, Chhapra. So I would like to highlight some of his work, and so I welcome you to be a part of this webinar on scientific social responsibility. It is my immense pleasure to introduce you, sir. He is a retired professor of physics from JP University, Chhapra, Bihar. He was a meritorious student throughout and got his PhD in 1980 from Bihar University on theoretical investigations of atomic collision processes in binary and counter approximation. 7 scholars did their PhD, successfully completed their PhD under his guidance. He joined as a lecturer in February 1977 and retired as professor in physics in 2016. He has published more than 35 research papers in reputed journals.
He has attended many national and international conferences and have delivered many invited talks and chaired sessions. She has also organized number of national conferences. Dr. Anil Kumar has completed CSIR and UASC funded research projects as principal investigator. He has worked in France also. Last but not the least, as a renowned academician, he is a life member of ISAMP, Indian Society of Atomic and Molecular Physics, and also been in its national executive executive committee for 10 years. Our college is privileged and honored to have Dr. Anil Kumar amongst us as our guest speaker in this valedictory session. Now I invite you, sir, for enlighten us with your talk. That is opportunity in diversity. Thank you. I am Anil Kumar, retired professor. Just a minute. I think I should share. Sir, please unmute yourself. Sir, please unmute yourself. Yeah, I did that. Is it audible? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. So, namaskar, ek baar fir se. The title of my talk is Opportunity in Adversity. Not in diversity, sorry. Adversity, I will talk about a few adversity, rather one adversity, which is a very common thing, but I feel that deserves our attention. Well, you can see the picture. It tells you something. The other one, very clear, it's the pollution. Sir, excuse me, sir. Sir, can you please share your slide in slideshow? So, Slideshow, okay. yes, sir. Okay. Slideshow, okay. From the beginning, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Now it is okay. So now it's opportunity in adversity. So you can see the picture and the next one. Obviously, both of them are related to pollution. A very big menace for the society, for the country, and for the whole world, I would say. This adversity is pollution. Everybody knows there are 7 types of pollution: water, land, radioactive, thermal, light, and sound or noise pollution. This one, my concern is sound pollution. A very strong kind of a stuff which affects our daily life, which is affecting our health, everything, and we are actually accepting it unknowingly. We just deny its presence. That's the biggest concern.
perhaps we don't even understand its significance. That's why I call it a silent predator. If I talk to a common man, well, his reaction will be something like that. Are you kidding? Sound cannot be a pollution. We enjoy music. We enjoy birds chirping. We enjoy so many melodious sound around us in our neighborhood. How it can be dangerous to us? But when they talk about this, they talk about music, but they don't talk about cacophony of loud orchestra, continuous honking on road, loud sound at construction sites, and so on and so forth. These days, in majority of big cities, I feel that our cities are, all roads are meant for bikes only. And if you see the stream of bikes and people honking on that, then perhaps you will realize what kind of problem we are facing. So normal sound is all right, but loud sound, that makes us very uncomfortable. There is one National Science Foundation report, National Foundation of USA, and that report is of 2019. So it says that people in general have become desensitized to noise around them. And many of us are not even aware that this has some negative effect on us. So that means individuals are subjected to this even without realizing it. Majority of the people, they don't realize what kind of problem they are facing, or what kind of problem they will face. In the same write-up, they had defined noise pollution. So it's very simple, and everybody knows that excessive emission of sound that adversely affects the community, interferes with processes essential recuperation, and may cause negative consequences. So when we reach to that stage, no sound is pleasant to ears. So naturally, one will have, if we talk about sound pollution, we will have to think about the loudness. And in terms of physics, it's the intensity of sound which causes pollution. And so to differentiate normal sound from noise, we need to quantify the loudness first. And as we know, if you want to quantify it, you got to have a unit. And in this case also, we have a unit, we call it dB, decibel. Graham Bell is well-known name. The guy who invented telephone. So this unit incorporates his name, and decibel. Bell is one unit, and 1/10 of that is decibel. So without going into the technicality of this unit, I would say that the softest sound that we can hear has been assigned a loudness of 0 decibel. Let us see a few more. Whispering, it's 30 decibel. Normal conversation which we carry out has a decibel score of 60. So up to this point, nothing is wrong. Everything is comfortable. But what will happen beyond this? But let me point out that whispering 30 dB, it's not a problem in normal course. But, well, in a bit lighter mood, I would say, if you watch TV serials, you will find this whispering is devastating, not for us, but for the family relationship. If you don't believe it, you must be watching a lot of TV serials. Go and watch TV serials of Ekta Kapoor, daughter of Jitendra. And then you will realize what kind of effect it has, this whispering. But anyway, that's not a part of pollution.
The World Health Organization is now very particular about this, and it clearly states that any sound above 65 decibel is treated as pollution. And as this decibel level increases, it becomes harmful. Once we cross 75 decibel, it's really harmful. And beyond 100 or 120, it becomes painful. It can affect us very badly. Well, if somebody has any doubt, just stand near or beside sirens, even firecrackers, and then you will realize what kind of effect it has. It can even cause ear injury. And all these sounds have decibel score between 110 to 150. So as this decibel score goes up, it creates a lot of problem. The webinar which we have today talks about the interrelationship between science and society. So this is a very important aspect which has been nearly ignored and which is adversely affecting the society. I remember in our childhood, there was nothing like sound pollution, at least in India, very less. But people didn't have any problem with hearing. But these days, a lot of people, lot of family members, I find they are hard of hearing. And it will be. This air traffic, if an overhead plane is going, it produces 130 dB. That's why initially all airports were made outside the city. But as the city went on expanding and government could control it, could put a control over that, now a lot of population is around the airport. They are badly affected by this. Whenever a jet airline take off or is going to land, that affects them. Car horn, that's 90 dB. Bus horns is more than 100. Bike honking is 100 dB. And bike honking has become a very common feature. On construction site, this pneumatic drills, they are very important things for construction sites. They are used in large number and they create lot of problems. If you are staying over there, then you will realize what kind of problem it creates. Even the other things like catering, bars, restaurants, pubs, clubs, there are a lot of people are together. That also creates 80 to 100 dB sound. Howling and barking animals, they produce 100 dB. So this list is very long. It goes on. And we are just unaware of this. We just neglect it. The government, everything cannot be done by government. We should be conscious about this. Okay, how serious is this problem? So in that very list of NSF, it has been told that Southeast Asia is on the top. 10 out of 15 noisiest cities are from this region, and we also come from this region. The gold medal goes to Dhaka, Bangladesh. But we are not very far behind. Moradabad, silver comes to us, and we can understand the reason. Moradabad has a lot of small-scale industries on metals. Lot of metallic stuff, they are made in Moradabad. And if you think about the list, if I don't have this entire list here, but if you think about them, the reason is population density. People migrating from villages to cities, the urbanization. We are now, and all these countries of Southeast Asia, they are now developing countries. So a lot of developmental work, construction work, roads, even rails, they are coming with full speed. So these are adding.
and they are damaging our hearing. And very badly are affected kids and very old people. And it's not only the hearing loss, it has actual physical problems like high BP, respiratory problems, headaches, even heart attacks. Suppose somebody has a very one of these problems and goes to a doctor, and he doesn't tell about it, and doctor doesn't ask him, where do you live? And he doesn't tell about that. So I don't think they can diagnose the real cause. The real cause may be noise pollution. It gives stress, fatigue, depression, anxiety, sleep disorders, lack of concentrations. So these things are there. And it's not only the human being which is being affected. The wildlife is also being damaged. It is affecting breeding cycles, rearing of small animals, birds, etc. In a lot of cases, extension of certain species has happened. I think sometimes back, about 10 years back, I would say, we used to see sparrows and all those things in large number. Slowly and slowly, they were extinct. Now it has started coming back. At that time, people thought that it's due to the mobile towers that they have become extinct. But that was not the only case. This noise pollution was also responsible for that. And just to know the effect of this noise on people's mood, the NSF actually contacted a lot of people in different areas, and they asked for responding to the noise. And they had these 3 words: annoyed, irritated, anxious. And if these things are there, well, we can very easily think what will happen to our mental health. And the worst part is that air, water pollution, they are very apparent. We can recognize them. We are concerned about them. But general public, they can't figure out what is noise pollution. Why is this? What's wrong with sound? Nothing there. There is nothing nothing wrong with this. And the reason is we believe seeing is believing. That's a very common saying. Don't believe anything until you see it. Unfortunately, you can't see it. So you can't visualize it. You can't even go in, even in your imagination, you are not able to appreciate this. And that's why it's a very bad stuff for us. We can say that people in general, they are just not aware of noise pollution. So if we want to address this issue, first we will have to know it. And then we will have to find out how does it affect individuals. People who are educated, they also just deny this noise pollution. They actually, if they are somewhere where some loud sounds are actually appearing, so they may be disturbed, they may be annoyed for a few minutes, but once they are away from there, they can indulge in the same affairs because they don't appreciate, they don't understand what they are doing. And as I said, now I will come to opportunity. That was the adversity. Now I will come to opportunity. Since we are talking in a college and science students are there, so naturally, I would say this opportunity means responsibility. And a student should take up this because we can't expect that everything will be done by government. The young generation will have to volunteer to educate general mass. And then only we can think about the steps to fight this silent killer.
And for this purpose, I have some ideas. I thought about it, that students, university, college students, they can survey those areas which are prone to noise pollution. They can monitor residential and commercial areas, hospitals, schools, their neighborhood, construction sites, busy traffic signals. And this monitoring is very easy. It's not difficult. It's not difficult at all. All you need a handheld machine. The machine is known as SLM, sound level meter. It's a handheld machine. It can measure noise level of a particular area and location. And if you want to get the total amount of noise generated in certain period, then there is slightly modified one, integrating sound level monitor. So this provide you, I mean, sometimes the sound level is not constant. I mean, it's fluctuating. And if it's fluctuating, then at least you would like to know what is the average level. So to get this average level over a period of time, you need, instead of SLM, you need ISLM. And these are very, very simple. It has only a microphone, so it takes this sound. And naturally, sound is a mechanical vibration. So the microphone its diaphragm will start vibrating, and from that current is generated, and that current appears on the screen. There is another thing, we call it noise dosimeter. In industry, workers and employees, they are directly exposed to noise pollution. So sometimes it's necessary that the amount of exposure over a time period should be known so that proper policies can be developed. So for that purpose, this noise dosimeter is required. I mean, we see that people who are working with radioactive stuff, or where even doctors going to MRI and other places, they have a tag over here. And that tag records the amount of radiation they are being exposed to. So similarly, we can have noise dosimeter. It exists. It's there. And all workers, employees who are working in this condition should have that. And then that can measure the amount of noise exposed to them. That's very important. And so I think we should motivate young generation. We have NSS, National Service Scheme. In that scheme, we should incorporate this, we should include this. And the institute can give some incentive for that. It may be a part of a small projects they can be asked to take up, and that will be very important. So that's all I have to say. And finally, my sincere thanks to all of you, the Government Nagarjun PG College of Science Raipur, organization, the organizer, the Research Advisory Committee at IQAC, patron and principal, Dr. P.C. Chaube, secretary, Dr. Sunita Patra, convener, Dr. Renu Maheshwari, co-convener, Dr. Anjali Odia, chairperson, Dr. Kavita Das, and Dr. Sandeep Vansutre. All eminent speakers, faculty members, participants, and students, my sincere thanks to you. Thank you. Thank you, sir, for thought-provoking speech. Actually, it's very important. And now it is time for discussion. Yes. If anyone, students or faculty want to talk about what is noise pollution or how it can be controlled, it's very good opportunity because we have gone through a basics of noise, its intensity. Sir, I have question. Rather suggestion we can see that as because we are
in this webinar, its topic science. How can scientific, it can be go for social responsibilities. What is our social responsibilities? Our students, they actually, the physics students or the students of mathematics, they learn physics. Even the school students, they also learn physics, and they very well know that what are decibel and what is the intensity of sound, and which one is pleasant, and even music. If it is very loud, the song, even which is pleasant in a lower decibel, it becomes noise at higher level. So there should be a differentiation between a music and a noise. Even if they go for pubs, and there we can see that lot of loud sound, maybe 100 to 110 decibel they are, but they are all involved in dancing. So there should be an awareness program, and the students, they should, we should involve students itself. First to imagine there, then you spread awareness about amongst the society. Yeah, you are right. That's why I said that a student should be involved in this. Once they are involved, once they start using this noise level meter, they will understand what kind of menace it is. And once they understand, they can also make others aware about it. Just stand on one red light, and you will find that people are just honking. I mean, nobody is moving, but they keep honking. It has become a habit. So once students are involved in this thing, if we ask them to take up this work, they can call it social service or whatever they want, or a small kind of project, they can prepare a project report on that. So in that case, they will themselves realize what kind of problem is this. And once they realize, then only they can tell others, they can convince them to be very careful on this issue. Yes, we can go for the project. The NCC students, NSS students, they go on traffic signal where there is so much of noise there. Simply the bikes and the cars, when they are standing itself, they have no way to go. Again, they go on making horn, and so it is very unpleasant. So it is very, very good opportunity. And also, even people, they don't understand what noise is doing, what is the noise pollution, and how it is harming our health. Long back, when I was in college, we had a song, Bollywood song. It said, "Teen kanastar peet peet kar, gala phad kar chillana, yaar mere mat bura maniye, gana hai na bajana hai." So those days are gone. अब तो 3 कनस्तर ही पीटा जाता है, यही लगता है. So the young generation should wake up to that call, and they should take up these things. And we should be pleased. Our eminent speakers, Louis sir, want to something. Sir, please unmute yourself and then ask. I'm Anil Kumar. Sir, Louis sir, I think want to something. Excuse me? Sir, please unmute yourself. Okay. No, sir. I am asking to Louis sir. Yes, sir. Hello, can you listen to me? Yes, sir. Yes, I would like to ask Dr. Kumar to add a new pollution linked to noise, which is information pollution. We are under a storm of information. We cannot analyze, we cannot read properly, and we get too much confusion. I think this is a phenomenon affecting mostly our students. Yeah, that's right. Not only students, the entire society. If we get some information, we can't be sure whether it's authentic or not. So, it's a very funny stuff. Atomic energy in itself is very important. It can remove all our this energy problem. Now it's up to us whether we use it to generate electricity or we use it to destroy humanity. We are moving towards that, and there is an answer to that too in physics. We say that every moment this heat content of this universe
for which we have a term entropy. It's increasing. It never decreases, never. It goes on increasing. And entropy increase means lack of uniformity, lack of, regularity. So if it's becoming irregular, so to some extent, the nature has made things like that we are moving towards irregularity, chaos. So under these circumstances, it is more imperative that we should keep control as much as we can. And for that, involvement of young generation is very important, very important. Thank you very much, sir. You should be ready to give leadership in their hands, and that's done everywhere except in politics. But anyway, we are not going to talk about that. So that's what I feel. Sir, I think earphones are also very harmful for the ear. Yes, it They is. are taking all the time earphone for listening, for studying. All the time they have put their earphone in their ear, and then I think it is very harmful for the student. It is harmful. It is harmful. You are getting all the vibrations very close to your diaphragm, ear's diaphragm. It's going to damage it. It's making them irritated. Yeah. That's right. And then ignorance also. It's developing ignorance and then irritation. Yeah. It's spreading ignorance. It's spreading ignorance. Yes. Whenever I saw a student whom I know, or a boy, putting something in ear and listening to mobile, then I tell him, तुमको क्या मोदी जी का फोन आया है या जोगी जी का फोन आता रहता है, लगातार सुनते ही रहते हो? They don't realize this thing. The ignorance is increasing with this earphone. So thank you very much, sir, for your nice, and then it's a very good and valuable information for noise pollution. I think our students will be aware about this noise pollution. This noise pollution is the welcome guest for in our homes and disturb our peace. Please aware about this. Now I invite Dr. Sunita Patra to say a formal thanks to Dr. Anil sir. Dr. Sunita Patra. Thank you, sir. Actually, the topic was opportunity in adversity. So I apologize for that. I read opportunity in diversity. So it is really very alarming, very good topic. Even the music, when it is loud, it is unpleasant. And students, they know the intensity of sound. They have read, they have given examination, but it is only theoretical. They get knowledge and just give questions, but they are not applying such things in their own life. So it is the students, we should actually, faculties can also make that students, what you learn, put that in your application part also. In opportunity, what is the opportunity? Opportunity of students to get the knowledge and spread them in the society and make people aware about the side effects, the health implications, which can cause even the definite of particular individual. Thank you so much, sir, for your thought-provoking lecture. And also giving these opportunities to so that the students, we can make such projects and we can develop a scientific temperament, or we can explain the local people, the society, the scientific way. Why should not go beyond 60 to 70 decibel noise? Thank you, sir. Okay, thanks to everyone. Thank you very much, sir. Now it is our last session. And our guest speaker is Luis Manzo Barreto. Sorry, sir, for if pronunciation is wrong. And then the topic of is social implications of chronobiology. As we know, all the biological rhythms are currently subject of an increasing interest in the society, especially for its incidence for the health. So, our formal welcome, I invite Dr. Deepali Rajwade ma'am to introduce our eminent speaker. Dr. Deepali. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's an honor and privilege for me to introduce our next speaker, Dr. Luis Mena Barreto. I hope, sir, I have taken your name correctly.
Sir has done his master's and PhD in human physiology from the University of Sao Paulo, Brazil in 1981 and did his postdoctorate from France in 1987. He has been working as a professor of Department of Physiology and Biophysics at the Institute of Biomedical Sciences at University of Sao Paulo, Brazil between 1980 and 2005. And since 2005, he had been a professor of the School of Arts, Sciences and Humanities at the same. He works in the broad area of neuroscience and behavior and in the specific area of chronobiology. He is an accredited advisor in the CLE programs, Neurosciences and Behavior and Cultural Studies. He is currently a retired professor working in the senior category of School of Arts, Science and Humanities at University of Sao Paulo. His thrust areas are chronobiology, wake sleep cycle, adolescents, sleep, biological rhythm, locomotor activity, circadian rhythm, and neurosciences. With his prolific experience in this field, he can be credited to be responsible of introducing chronobiology research in Brazil and Latin America. I welcome you, sir, and I request and invite you to begin your talk. Good morning. For me, it's 6 in the morning. For you, it's in the afternoon. This time difference sometimes makes us wonder what is time? And part of my subject of my talk is about time. Time in organisms. The chronobiology can be defined as the study of temporal dimensions of life. And that includes biological rhythms, circadian rhythms, sleep, wake, attention, memory, and almost all other functions in our bodies or fluctuate. And we study those fluctuations. I thank you very much for the invitation. I sincerely regret not understanding a single word in Hindi. So we have to stick to this common scientific language, which is English, which for me is it's an effort because my original language is Portuguese. Here in Brazil, we speak Portuguese. So I have a presentation I would like to share with you. Can you see that? Yes, sir. Okay. Congratulations for having spelled my name correctly. It's I know it's a bit different for you. Okay. I will talk about social implications of chronobiology. And I have a habit of dialogue. I love dialogue. I don't like monologues. So please feel free to interrupt it at any time of my talk with questions, words you're not familiar with, concepts, and so on. I take them gladly. Origins of chronobiology. But I suppose perhaps most of you are aware of what chronobiology is and how it started. We can go back to the first mentions of biological rhythms in ancient Greece. They observed the leaves of plants, and the leaves opened and closed, open and closed according to daylight or not, or to day and night. But that remained only an interesting observation without any consequence in the cult world. And not until the 18th century, there was the first published work by a French astronomer
who kept a plant, Mimosa pudica, in a dark place in his house. And he observed that the plant was opening and closing its leaves more or less coinciding, more or less coinciding with night and day time. But that did not cause much impact at that time, although the French astronomer was the secretary of the French Academy of Sciences. But it stopped there. Nobody published anything of relevance in the next 100 years, until an Englishman in the 19th century took the plant to the laboratory and timed its opening and closing of leaves. And he came to the surprising result that the day of the plant was 23 and not 24 hours. And so he said, and that was a very, very provocative statement, that biological time was relatively different or independent of environmental time, thus allowing for questions of what is biological time. But then, in the beginning of the 20th century, the psychiatrists in Northern Europe, Scandinavia, complained about the amount of people looking for help in the autumn and beginnings of winter. And that was later known as the seasonal depression, which is very important and coincides with the shortening of the day. So all these facts are more historical facts, which did not have any continuity, because the Scandinavians opened the society for the study of biological rhythms, but because of the world wars, it did not go on. So not until the middle of the 20th century in the United States, in 1960, the Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, clearly multidisciplinary event, focused on the phenomenon of biological rhythmicity, which was surprising at that moment. So in that symposium, new words, because a new branch of science was beginning, new words were coined. For instance, the word chronobiology was proposed by Franz Halberg at that meeting, as well as the words circadian, Zeitgeber, referring to environmental stimuli that are able to adjust our biological rhythms. Because another conclusion that came to light at that meeting was that even though biological rhythms in isolated organisms were different, slightly different from 24 hours. For instance, humans have a day of 23 something hours, and other plants, some more longer than 24, others shorter than 24 hours. They end up adjusting to the 24 hours of the day. And so environmental stimuli were called Zeitgebers, which is a German word for time giver. And today, biological clocks is an expression known everywhere in the planet. It's and I'm sorry for that, because biological clock carries a contradiction. What is a contradiction?
a clock, a good clock is a clock independent of weather, independent of our actions. And biological rhythms clearly depend on our actions. For instance, one of the most well-known findings at that event in 1960 was the phenomenon described by Jürgen Ascher, who showed that humans kept in constant illumination in a bunker where he had his laboratory, showed a rhythm of 23 hours persisting during the isolation. But something that never occurred to them is that people close their eyes, even in constant illumination. So people do interact with environmental stimuli, and this the adjustment happens when people are living in an open environment. Any question till now? Is that clear? Well, and yes. Yes, sir, it is clear. You can go ahead. It's very clear. Oh, it's clear. Okay, thank you for the feedback. And now we have, or we are facing with important changes in our biological rhythms during the COVID pandemic. The COVID pandemic affected your country. I learned yesterday that 500,000 people died in India, which is much less than what happened in my country, in Brazil, much less populous than India. We had 700,000 deaths due to COVID. And that there is a political explanation for that, because our president, former president, was a negativist. He denied the vaccine, said the vaccine would people who took the vaccine would be transformed into alligators and other stupid things like that. And so many people in Brazil were not vaccinated due to that campaign, which is points to a social role of science. We did not succeed in explaining the need to vaccinate, and so defeat the negativists, because they still talked about the problems of vaccination. Well, there is a fundamental principle in chronobiology, which is the temporal dimension of living organisms. And that can be seen, can be detected in both phylogeny and ontogeny. For instance, I give you an example which makes the concept clear. We are a diurnal species. Perhaps we have not always been a diurnal species. Many findings point that our ancestors were mostly nocturnal, of the mammals in general. Most mammals are nocturnal, or many mammals are nocturnal. So in the journey to diurnality, the preference of our activities for during daylight was a jump in evolution, was a change involving certainly mutations and adaptations, enabling us to become diurnal and to adjust our activities to diurnality. Although we know another phenomenon which is very important, and this brings us to ontogeny, which is diurnal preferences, eveningness and morningness. We are different. We are not the same preferences, and there is a normal distribution between diurnal morning or evening preferences, which is very well studied. Even today, many researchers dedicate
their scientific activity to understand these preferences. The important thing here, this is a provocation. The important thing here is that we inherit as a species diurnality, but we do not inherit morningness or eveningness. On the other hand, what we do inherit is the possibility to adjust our biological rhythms to our lives. And this is, it goes into the account of ontogeny, of the development of each of us, where we selected times of day which were more favorable to our preferences. And this, I bring the concept of niche. There is a very well-known concept of geographical niche, environmental niche, where species adapt to a certain environment where they are free or less attacked by predators, and they have food available, water available, and so on. So this does not happen at all times of day. Some times of day or seasons of the year are more rich or richer than others. And so we, as species, we tend to adapt temporarily to a niche. This is the concept of temporal niche, which has been relatively neglected in evolutionary studies, and it should be part of it, I think. In evolution, there are changes and adaptations. We are always, evolution does not stop. We are always evolving. Some of the mutations are favorable, some are not, and most are indifferent. They don't have any consequence, but they are there. And so we have to understand that we are responsible. We as a society are responsible for our temporal niche, if I make myself understood. We build our temporal niche, and these temporal niches change according to ages. A newborn baby has not a very clear circadian rhythm. It develops a circadian rhythm in his exchanges with his environment, involving maternal care, feeding, activity, light, dark, all that helps us understand how we construct in our development our preferences in biological rhythms. So here, a provocation about the idea of normality. If I ask you, what is your normal temperature, body temperature? Most of you, I suppose, will say 36.5 degrees centigrade, or the equivalent in Fahrenheit. And this is not correct. I'm sorry to inform you that this is preconception of normality as a fixed value. If you take your body temperature in the mouth, in the armpit, in the wrist, or in any part of the organism, you will notice that it fluctuates every day with lower values in the early morning and higher values in the late afternoon. And that happens every day. And the change is not negligible. About 1.5 degrees centigrade, reaching 35 something in the end of night, the early morning, and about 37 in the late afternoon. And so if you take 36.5 as normal, every deviation from that value should be a matter of concern. But this conflicts with reality. Reality is fluctuation. And this is not surprised in an oscillating planet. We are under day and night since the beginnings of our species.
And so our body also fluctuates. Okay? Is that clear? Well, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. okay, please interrupt me. I think that we go now into the social aspects of chronobiology. What chronobiology can do for society. And most obvious of all is work and school schedules. Work schedules, when you ask someone who is responsible for the timing of work shifts, you will get incredible answers. None of them confirmed by empirical observations, scientific observations. For instance, shift work is a candent issue of discussion. Is it bad for your health? First question. Second question, why do some people never adapt to night work, for instance, with night shifts in shift work? They just quit. They do not stand it. And others live with that, suffering sometimes more or sometimes less, but they live with it, and they have to, because they have to keep their employments. And there seems to be no ideal work schedule. Or, in other words, I think that we could devise flexible schedules, adapt to allow for adaptation of workers. During the pandemic, we experienced such flexibility with social isolation, and we worked at home. And so differences in working time became more evident, because some morning people tend to concentrate their work in the morning, and the evening people in the afternoon. And so about physical activity, about exercise, for instance, there is a clear difference. If I ask you here, for instance, in this meeting, what time do you prefer to perform physical activity, there will be no consensus, and an average would not allow us to understand the phenomenon. So an average of the timing of physical exercise of this population here in the seminar would vary between the 6 a.m. and 6 p.m., for instance, and an average of 12 p.m. would say nothing. So we would harm morning people and evening people by proposing a fixed schedule. So what we do and what we need is more research on individual characteristics and selecting flexible schedules to adapt, to permit adaptation, and thus prevent several diseases, several pathologies associated to temporal desynchrony. This is a very important issue in literature, in chronobiological literature today, where we find desynchrony as the main cause of many sufferings, mostly in mental health. Depression, anxiety, suicide rates have gone up during the pandemic, and some of the causes are to be found in the synchrony, what happened to our rhythmicity. Another issue, and I don't know whether this is being discussed in India as well, it is discussed in Brazil. The school schedules. What is the best time to teach? The morning or the afternoon, or integral, as we are experiencing now in Brazil, from morning and
afternoon is what is the performance of students subjected to this to these different schedules. I have a proposition which I am trying to discuss now in my country, which is trying to establish knowledge about adolescents or infants' rhythms, and then discuss the school schedule, taking into consideration those rhythms. For instance, we published a book dedicated to teachers and parents called "Sleep in the Classroom." It is in Portuguese, unfortunately, and so not available to you. But I will resume what we said in that book. We try to convince both parents and teachers to look at their students from this chronobiological point of view, to check whether the students in a class are half asleep, and why. What is behind that phenomenon? Is that only because of evening preferences during adolescence? This is a big issue which demands further and clearer explanation, which are unfortunately we're not at this moment able to answer that. Another issue which is open for a social understanding of chronobiology is family routines. For instance, in a house, we don't have any reason why all rhythms should coincide. In 2012, I went to India to the New Delhi Conference on Chronobiology, and there I showed an animation in PowerPoint, a family rhythms, where I showed from the baby to the grandmother, grandfather, very different biological rhythms according to their ages. And so the schedules in a family, the timing of meals, for instance, is a negotiation between those involved. Some are hungry at noon for lunch, some are not. How do we deal with that? We are ignorant. We don't know how to deal with that because we tend to think that school schedules, meal schedules, family routines, all derive from natural rhythms. And natural rhythms, when investigated, do not coincide necessarily with those socially established rhythms. And so we have to consider that in our choices. And most of all, we have to negotiate rhythms. And that is my proposition. I think it is very, very difficult. We tend to collide with preconceptions, mostly wrongly based on biological notion of rhythms, which are factually wrong. For instance, the idea that we all should wake up at 6 a.m. and go to bed at 10 p.m. This is imposed socially and does not necessarily coincide with people's rhythms. For instance, you probably have the adolescents in your neighborhood, in your family, or in your in your parents and so on. You deal with adolescents, and it's a well-known
universally demonstrated phenomenon that adolescents after puberty tend to eveningness. They deviate from their morning preferences during early childhood to evening preferences during adolescence, which change in adulthood. They come back to morning preferences, and in old age, we become, I'm 77 now, and I'm extremely morning. For me, the schedule of this talk was very convenient because I wake up every day at 5 a.m. And my family is still asleep. But for sometimes we have two adopted daughters aged 11 and 15 years old, and they sleep till 10 in the morning. We are in our summer vacations now. And so ages should be considered, taken into consideration when we negotiate rhythms. And here, when I say negotiate rhythms, I am proposing that this should happen in domestic environment, school environment, and work environment, where the issues linked to the development and aging, and most of all, education should be taken into consideration. I have an invitation now for you. Sir, we were talking about the school schedules and why the students they are sleepy during the lectures. Actually, what in India we are seeing that students they have they study whole night and then they sleep whole day. And they actually, I think the indigenous cycle is that we have to sleep whole night and then we have to sleep. So this type of tendency to students, it is actually alarming. So Yes, do it affects their performances? I think it will also affect their performances. yes, but we should never, I think, isolate biological and social factors. They come together. And of course, adolescents seek their temporal niche where they can be more independent. This is my thesis. I'm trying to prove it later. The negotiation is difficult. Everyone who in the family with adolescents is a daily fight. Go to bed, tomorrow you don't wake up for school, and so on, so on, so on. We have to dig into that phenomenon and assume that there is a negotiation involved, and we have to take it seriously. Yeah, and Okay, also I the mean- time of meal. Actually, it also yes. leads to digestion problem nowadays, which is very common here. Yes, yes. And so they don't eat at lunch and they eat junk food after because they are hungry. And so when they go to school, they eat candies and so on. So there's a problem. Yeah. But I have an invitation for you. I think my time is about over, is it not? Yes, we have time for discussion if anyone have any topic to discuss or want to say something. I'll leave you with this invitation. How do we teach time for preschool children? How do we prepare our children, 3-year-olds, for instance? How do we teach time? Are there any other ways than showing clocks? Because this is what is done. We show the clock and say, now it's time for study. Now it's time for a meal. Now it's time for playing. There's no discussion. There's no dialogue. Yeah. There should be a So discussion between them. I leave you with this provocation. Yeah. I'm responsible for now for a master's degree where my student is teaching time
is experience the teaching of time with cards, cards illustrating. I am hungry, I want to play, I want to study, I want to whatever, to sleep. And the professor asked, what will feel now, what we should do? And the children show their cards. And then they negotiate. We are teaching that the biological timing is negotiation. That's my proposition, and I leave you here. Thank you for your kind attention. Yes, sir. It was an excellent. Actually, we were supposing what chronobiology has to do with the society. But yeah, it is a thought-provoking. You have given such a measures that time schedule, learning schedule, eating schedule. There is so much. There are different aspects. Thank you. Sir, I have a question. Hello? Yes, Sir, I yes, have a question. yes. Sir, according to I am a woman of evening. I am working in the evening hours. In India, it is early to bed, early to rise is a good thing. But I work at the evening time, at late night. It is harmful for me. Well, I made a survey on eveningness and pathologies, and there is an enormous amount of data indicating that eveningness is bad for your health. If you put chronotype in your Google, and you'll find hundreds of papers linking chronotype with memory problems, mood problems, anxiety, depression, even suicide. There are many works, but this is the surface of the phenomenon, in my view. We have to go a little deeper. We have to dig into what makes someone eveningness oriented. And this is to be found in the ontogeny of that person, in the development. I have a thesis, it's only a hypothesis at this moment, that our preferences, more morning or more evening, are mostly created during the first years of our lives. This is only a hypothesis. I'm not saying this is true. I think this makes sense because diversity is preserved in society. We still find morning and evening people today at all ages. The normal distribution changes a little bit from age to age. And this is also a developmental effect, which needs more study and a deeper understanding. This is what is the task of today's chronobiology. Sir, I have a question, sir. Sir, we may have different preferences regarding like being a morning person or evening person, but initially you talked about the seasonal disorders, which happen when we have short daytimes. So that definitely means that sunlight plays a major role in the moods of the person. Then is it advisable then, although if I feel that I am a night person and I prefer working at night, is it advisable for me because that may lead to mood swings or like mental issues? Yes, my suggestion is that you perform an experiment with yourself. You keep a diary. Diaries are wonderful. You keep a diary of the timing of sleep and wakefulness for about, I recommend about 3 weeks at least. And so you put all those schedules in a graph. And so you see how your sleep and wake hours change along the week, for instance. And they do change. If you're a worker in the at weekends or not, that makes a huge difference. Your biological rhythms may sort of slide in time during the weekends or in vacation. And then you know how you cope with your time. And then you perform the experiment. What is the experiment? Try to change your routine.
try to advance your meals, your exercise, your activity, your wake up time, and see what happens. You continue to register in the diary. And so the least positive result of this experiment is that you end up knowing yourself much better. And you start associating your feeling better with the change, or no, you might end up feeling worse after the change. And this is individual characteristic. And reducing to average is a very, very serious mistake. It's an imposition. It's arbitrary, dictatorial. And that is wrong. It collides with biological facts. Okay? Yes, sir. Sir, one more thing, sir. You said like in a family, people of different age groups, they have different rhythms and that should be respected. But I have a question that if everyone is free to act according to their biological rhythm, won't it affect the social behavior of the person? Like we will not be having a linearized, or although it may seem like imposing on somebody to follow certain rules, but won't it affect the social behavior, like the kind of family interactions we have? Yes, you're completely right. Those facts, they are facts. Social commitments of the members of a family should be put on the table to negotiate. This is the point. This is my point. There is no fixed rule, and there shouldn't be, because life changes, commitments change. People start working at night. They were not working at night before. And that implies a need to rediscuss the family routines. Do you follow me? And so sometimes biology is brought into the scene as the definite truth. It is not. Because we are always changing. This is the biological fact. And so we should refrain from trying to impose biological facts as absolute, as eternal, as fixed. No, they are not. A condition of the adaptation of human beings to an oscillating planet is both incorporating oscillations and incorporation mechanisms of adaptation to those oscillations. We are synchronized by the light-dark cycle, by social cycles, by feeding cycles, but social interaction, most important, social interaction cycles, all of those converge to produce our actual rhythms. We are producing dysynchrony all over the planet. And we are producing pathologies linked to this dysynchrony all over the planet. Sir, I have one question. I have a suggestion. Sir, oh, yes, please, go ahead. Yeah. Now the present generation is very much busy or engaged with their Android phones or the mobiles. So how you see this as a chronobiologist? Oh, sorry. I'm trying to share my suggested readings. 2 suggested readings. I can send to the organizers my PowerPoint presentation. Okay. Okay. Yes. Thank you, sir. Okay. Now, please, could you please repeat your question? I was working with PowerPoint. The present generation is very much, engaged with their Android phones, mobile phones.
Yes. So how you will see as a chronobiologist? Yes, this is quite difficult. With my adopted daughters of 11 and 15 years old, we impose 1 hour per day at most. And it is always negotiated because they try to extend that, and they try to cheat by using the phone during the night, sometimes all night. And it's a very tense situation, but we bring it to the table to negotiate. And I've been reading a lot about the negative effects of this social network addiction. It's an addiction. It's like alcohol or tobacco. It's terrible mostly because it creates a restricted network of information circulating only among pairs who think exactly the same. And so it closes our eyes. Kids don't read anymore. That's why I emphasize education. We should put themes to society, and this is, I understand, our social responsibility. Thank you, sir. Thank you very much. I will leave the slide here so you can copy the suggested readings. Henri Lefebvre is a French philosopher. Now he died in 1991, and the book was published 1 year after his death. And in this book, Éléments de rythme analyse, Elements of Rhythm Analysis, he proposed a very, very provoking thesis. He says that when you analyze the dynamics, the temporal dynamics of a factory, of an office, of a family, you detect power relations of power in that setting. And allowing us to analyze and adding, Lefebvre adds that oscillations in a system, in the domestic life, in the school life, in the factory life, are occasions for change, both rebellion and both adaptation. It is fascinating reading. I found this book about 5 years ago, and it keeps hovering over my mind because it's finally offered me a link between my information in chronobiology and my view of society. And when I was invited to this webinar, Social Responsibilities of Science, I said, wow, there is a very good opportunity to share my today's preoccupations. And the other is a Korean philosopher who lives and works in Germany, Byung-Chul Han. He wrote The Scent of Time. In this book, which is a small book, a short book, it's not a very difficult reading. In this book, the author, Byung-Chul Han, opposes the idea that we are overwhelmed by a lot of information. He says this is only the surface of this phenomenon. He proposed, and I entirely agree with him, that the hard nucleus of the problem is the synchrony produced by this amount of information. Why is that?
we don't pay attention anymore to what we read or what we cannot pay attention. We have to go to the next, to the next, to the next. And thus we are attracted to media who treat facts superficially. We don't go deep into the facts. And this is both political, social implications, mostly educational implications, we have to be to consider. The scent of time. Thank you, sir. Thank you very much. So, I am done. Any more questions? Thank you very much, sir, for your valuable lectures. You illustrate the importance of work schedule, family routines, times for meal. It is all very important as the chronobiology is an upcoming field of this study. So behavioral function, mood disorders, including depression, bipolar depression, seasonal affective disorders have been found to be linked to abnormalities in the circadian rhythms. And you also illustrate that how can we connect it with the society and give a very good suggestion to volunteers, our students, to go through the spread this scientific basis of circadian rhythms in the society, and it will be helpful for the management of different aspects of life. So it is very valuable lecture. Thank you very much, sir. Now I invite Dr. Deepali Rajwade ma'am for formal thanks to sir. Deepali. Thank you, ma'am. Thanks for the amazing talk, sir. It was really wonderful to listen to you. You talked about circadian rhythms and their effect on human behaviors and how our routine behaviors like work and routine, school schedules, family routines and development and aging are affected by it. It was very provoking to know about the seasonal affective disorders that happen due to shortening of the day length in most of the people. Also, I like the fact which you told about the evolutionary aspect of man being a diurnal organism, although most of the mammals belong to the nocturnal category. And I learned a new thing from you that our biological rhythms are not necessarily coinciding with the social norms, and it is more prominent in different age groups. The best part of your talk was, sir, that you left us with certain questions which we need to explore ourselves. Thanks for the mind-boggling session, sir. I express our gratitude towards you for giving us so much time and giving us an insight into the field of chronobiology. Thank you so much, sir. Thank you, Deepali. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Deepali. Now it is time for end. Although we have gained some knowledge and new ideas from our 2 days webinar, but it is said that we are closing the door of this lively and stimulating debates. However, it is very privilege and honor for gathering of this eminent people from different parts of the world in the field of science and society. For summary of this webinar, I invite Dr. Sunita Patra to summarize this webinar of 2 days webinar of science and society. Dr. Sunita Patra. Thank you. So it was really very good. We were very lucky to have, and we were lucky enough to have speakers from diversified field of science. Actually, it was a national webinar on scientific social responsibilities, and all the speakers, they were from diversified fields. And it was organized by IQAC and Research Advisory Committee. So I will just summarize. So day one, it started with inaugural function and welcome address by myself, organizing secretary. And I talked about necessity to develop a framework to facilitate the integration of science and society and build synergy among stakeholders, thereby ensuring transfer of scientific knowledge for the benefit of society. And an inaugural address was given by our principal, Dr. P.C. Chauvey. He gave a hearty welcome to all the eminent speakers and the participants. Dr. Renu Maheshwari, convener of the webinar, she highlighted the theme of webinar. She also talked about the relevance of conducting this webinar as
Government Nagarjun Postgraduate College of Science has a single stream and has much responsibilities to spread scientific temperament. And our keynote speaker on first day were Dr. Prakash Bishen. He was introduced by Dr. Savita Singh, Assistant Professor of English, Dr. Prashant Bishen, Honorary Emeritus Professor, School of Studies in Biotechnology, Jivaji University, Gwalior. He gave lecture on food and human health. He emphasized on our eating habits as it is directly connected with type of microflora which develops in our gut. He also talked about probiotics and their significance. He was introduced by Dr. Sunita Patra. Then second guest speaker was Dr. Pramod Rath, Professor JNU, Delhi. And his lecture was on inspiring students in science education and research to make a better society. He enlightened how students can be inspired to get their goals, and which is sky's the limit for them. Only thing required is zeal to achieve goal, and that faculties can play a pivotal role in inspiring the students to achieve their goal. Third speaker was Dr. Dinesh Mishra. He's an ophthalmologist, president of Andh Shraddha Nirmulan Samiti, Raipur, Chhattisgarh, and his talk was on scientific temperament and social superstitions. He had done a lot of work to make aware of the scientific facts and not to be conservative and orthodox without knowing the facts. He was introduced by Dr. Renu Maheshwari, convener of the webinar. And fourth speaker, myself, I have the privilege to give a talk about sickle cell awareness, a scientific approach. And actually, I gave stress to make students aware of scientific facts about this disease so that they can spread this knowledge in their home, in their society, in their surroundings for going for before marriage. They should go for whether the person whom he or she is going to marriage is a carrier or a sickle cell, so that the next generation may be devoid of that disease. Myself, I was introduced by Dr. Sangeeta Bajpai, Assistant Professor Botany, and the whole session was conducted by Dr. Deepali Rajwade, Assistant Professor Biotechnology of our college. Then it was in the second due, that is 28th of January 24, our third technical session is started from 12 p.m. onwards. Fifth guest speaker, she was Sadhna Sharma, and his lecture was how science impacts our daily activities. Sadhna Sharma, she is academic director, MLC College, Korba, Chhattisgarh. Our sixth speaker was Dr. Varnika Sharma, and his lecture, her lecture was on social direction of science and youth. Dr. Varnika Sharma, she is an associate member of Center of Defense Studies, Research and Development, and she is a fellow there. She has dealt with Maoist. She emphasized that not to impose yourself on tribals, but to deal with a friendly matter and to listen to them, deal with them and their problem with patience. Science should enter in the remote areas for enlightening them. She was introduced by Dr. Kavita Das, Assistant Professor Zoology. Our seventh speaker of this webinar was Dr. Mr. Shashank Sharma, and his talk was on social cultural studies in science. Mr. Shashank Sharma is former director Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy, Raipur. He emphasized on Indian knowledge system. Every science student should grow through our Vedas. It describes about fundamental concepts of engineering, medicine, genetics, architecture, everything. Every Indian should know how rich our Vedas are. Everyone can find any type of solution in Vedas unless and until we learn it. We should respect our rich tradition. Second day of webinar was again conducted by Dr. Deepali Rajwade. Then in the fourth technical session, that is the valedictory function, it was done by Dr. Kavita Das, and our speakers of valedictory session were 8 guest speaker, Dr. Anil Kumar, Professor JP University, Chhapra, Bihar, and he gave a lecture on opportunity in adversity. He talked about science and noise pollution, negative effects of noise. Noise, it also affects wild animals and birds,
as it also affects their breeding cycle, and how students can help spreading awareness about it. And the last speaker were Louis Barato. He talked about social implication of chronobiology. He talked about origin of chronobiology and told that biological rhythms are different in different plant, animals, and different organisms. And working schedule, family meetings, aging, development, it is very important as it affects the endogenous rhythm and may lead to bad health issues. So in this way, we had diverse eminent speakers, zoologists, molecular biologists, physicists, chronobiologists, medicine man, journalists, military, psychologist, and social influencer. I am really from depth of my heart thank all the speakers for accepting our invitation and making this webinar include a wide aspect of science and how to make measures to spread science to the society. Thank you very much. Madam, unmute yourself. Yes, madam. Thank you very much, Sunita Patra ma'am. Now it's time for our valedictory speech from our principal, sir. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. He has ability to reduce the complication to the simple form and make the things done in a very flawless way. And it is our principal, sir. It is his guidance and motivation we are able to achieve this target. With all my respect, now I invite our principal, sir, for his valedictory speech. Sir. I thank one and all for making this 2 days webinar on SSR organized by IQAC and Research Committee a grand success. Without your active participation, this could not have been possible. My heartfelt thanks to Dr. Prakash Vishen, Dr. Pramod Rath, Dr. Dinesh Misra, Dr. Sunita Patra, who is organizing secretary, Shraddha Sadhana Sharma, and Dr. Varanika Sharma, Mr. Sasank Sharma, and Dr. Anil Kumar, and Dr. Luis Meno Barote, who is from Brazil. I also thankful to our organizing committee, organizing secretary again Sunita Patra, co-convener Dr. Anjali Avadia, Dr. Renu Maheshwari, in charge IQAC and convener of this SSR webinar, technical committee Dr. Sangeeta Bajpayee, Dr. Kavita Das, committee members Dr. Sandeep Bansutre, Savita Singh, Dr. BP Tripathi, Dr. Jaina, and Dr. Deepali Rajbade. I wish all of you a great success. Thanking you all again. Thanks. Thank you very much, sir, for inspirational words. Now, the more we express thanks, the more gratitude we feel. The more gratitude we feel, the more we express thanks. It is a circular and it leads to a happier life. Now I invite Dr. Renu Maheshwari for vote of thanks. Madam Maheshwari. Thank you, Kavita. Good afternoon to everyone. I, Renu Maheshwari, feel very privileged on this auspicious occasion to deliver a vote of thanks on behalf of IQAC and Research Advisory Committee of our college. Saying thank you is a polite way to express gratitude to someone, but this word would be less appropriate for our keynote speaker, Dr. Prakash Vishen, who is Honorary Emeritus Professor, School of Studies in Biotechnology, Jivaji University, Gwalior. I would like to mention here that he is alumni of our college. Despite of his busy schedule, he consented for keynote talk. I would like to convey my heartfelt gratitude to you,
for joining and making this event a success. Thank you very much, sir. My special hearty thanks to our special guest and renowned scientist, Dr. Pramod Rath from JNU, Delhi, who is inspiring us to make a better society. Thank you very much, sir. My sincere thanks to Dr. Dinesh Mishra, ophthalmologist and president of Anshraddha Nirmulan Samiti, Raipur, Chhattisgarh, who motivating us to create better society by his talk on scientific temperament and social superstitions. Thank you very much, sir. I would like to thank to our colleague, Dr. Sunita Patra from Government NPG College of Science, Raipur, be a part of this webinar as a guest speaker and gave a direction for counseling of sickle cell anemia. Thank you, madam. I am very much thankful to Sadhna Sharma, Academic Director, MLC College, Korba, Chhattisgarh, who accepted our invitation in a very short period and spare time for us from her very busy schedule. Thank you, madam. We are really very grateful to our alumni, Dr. Varnika Sharma, Associate Member of Center for Defense Science, Research and Development, Fellow ICSSR, take time out of her extremely hectic schedule for us to be a part of this event. Thank you, madam. We are very much thankful to Dr. Shashank Sharma, who accepted our invitation in a single telephone call and shared his views for this webinar. Thank you very much, sir. My heartfelt thanks to our guest of honor for valedictory function, Dr. Anil Kumar, professor from Bihar, and Dr. Luis Menna Barreto from Brazil for having spared their time with us for this webinar and have inspired us by their talk. Thank you very much, sir. My special thanks to our respected principal, Dr. P.C. Chaubey, patron of this national webinar, who motivates us to strive for excellence and as a source of strength. I am very much grateful to organizing secretary, Dr. Sunita Patra, motivated and dedicated organizing committee, faculty, colleagues, and non-teaching staff members who always stand by us and to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. I would like to thank all of them who directly or indirectly were associated with us for this event. I would like to express my appreciation to everyone to joining this webinar, either Zoom platform or via YouTube, and making this great event great success. Thanks to all of you. There is a quote that behind every successful man is a woman. But here I want to mention that behind the success of this webinar is Mr. Ronak, a student of class 9th. Without his support, this event was not possible. From purchasing Zoom platform, generating link, and online live streaming on YouTube, all of this were arranged under his guidance. Thank you, Ronak. Thank you very much. Once again, thanks to all of you for making this national webinar on scientific social responsibility. Wish you all a safe and healthy life. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much, ma'am. And I also wish my all extent of my sincere thanks to amazing guest speakers and participants, without which this webinar would not have been possible. According to Henry Wadsworth, great is the art of beginning, but greater is the art of ending. So thank you very much, all of you. Now it's to organizing secretary, Dr. Sunita Patra, to declare this webinar end. Thank you, sir. And Dr. Anil, sir, and Dr. Barreto, they are still with us. Thank you so much. And for enlightening us. These of the two topics were more enlightening, the noise, the chronobiology, and we have covered all different aspects. Actually, when we started, we were thinking of how much cover we could area, because science is a very vast. And after starting our webinar, we have gone through such different aspects that we were really enlightened and also very honored to have such experienced and eminent speakers amongst us.
Thank you for accepting our. And actually, I got a mail in the morning. Dr. Berato was not able to join due to storm, and we were really a little bit depressed how we could able to whether he will be able to join us or not. But again, it was very good that he didn't even he joined and also completed his lecture in a very good manner with a good connectivity. So it's also scientific achievement. Again, thank you all very much. And I think I should declare this to end. Thank you for joining us. Thank you very And much. everyone, they can. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I think, sir, just a while, we should take, because we are from different places, sitting on our homes and very place. So we can arrange visually, virtually we can arrange a group photo. So everyone with your videos on. Please open your videos so we can take a group photo. I think I can take this. Okay. Now with permission. Thank you, sir. Thank you. very much. So we will meet again, either in virtual form or physically. I rest here.